It's a battle between two teams seeking a revival by earning their first points of the tournament. Balochistan have struggled with the bat, with their skipper Imamul Haq failing to make it to double figures in 2 innings. Or Arslan catch. Ahmad Butt, with 34, has been the top scorer so far. And Balochistan will be looking for a vast improvement in batting if they are to stay in contention. Southern Punjab have fared somewhat better, with Mohammad Imran and Amir Yamin striking form. However, victory has remained elusive with losses against Sindh and Khyber Pakhtunkhwa in their 2 games. He said that superbly. That's gone for 6. The stakes are high for both teams in their desperate hunt to stay in the reckoning. Hello and good afternoon and welcome to match 7. Balochistan versus ATF, Southern Punjab, live from the Pindi Cricket Stadium. Let's have a look at how the teams look in the tournament so far. KP 2 out of 2, they are leading, and why not? They've got a healthy run rate. GFS Sindh performed well yesterday, and they've got 2 out of 2 as well. Northern at 3. Well, talk about the 2 teams who are going to play the first match today. Down at the bottom, let's see who gets their first score. Welcome to our show. We try and build up something in terms of these 2 sides who are looking for their first win. I've got Mike Haseman alongside me. I'm going to try and bombard you with questions. We've got limited time. When you're at rock bottom, you don't have much to lose, and that's the story with these 2 sides. Whoever wins today leaves the other one behind. Yeah, listen, when you've got a situation like this, there's one thing that's got to happen. The senior players, the guys, have got to stand up and be counted here. And the senior players so far for both sides haven't done that. So they've really got to make a stand in this game. And with a little bit of luck, some of those junior guys come through as well. So it's a senior player's got to set a trend, because suddenly if you play 3 and you lose 3, you're in big trouble. I was talking to the captains in the post-match presentation yesterday as well. They feel it's just a bit tricky. They find this wicket on the slower side. We're expecting scores in the excess of 170. It's not happening. The spinners are playing a good role. There's sort of variation with the pace as well. I'm not sure why they're finding it a bit tricky, because this surface looks pretty good to me. You can't be too choosy about surfaces around the world these days. I don't think there's any excuses of not adapting. These guys can play. You've got to adapt on this sort of surface and play better. The highest, what are we talking about, 150ish, just above that at the moment, batting first, the average score, versus 170 odd, mid-170s last year. They've got to improve on that. The average score batting first has got to improve. All right. We're talking about the pitch. Let's join Sanamir and find out what's it going to be like today. It's day 4 of the National T20, and we have got Balochistan versus Southern Punjab. What we see here in the pitch, at the moment, what's really good to know that this is the 4th day, consecutive day, but the groundsmen have done a great job. You cannot see any spike marks. It's a very beautiful wicket, hard wicket, and again we will see some runs there. But the average score, the first inning score, has dropped down to 155. And that's an area of concern, whoever is batting first. And that's why we are watching that the team that's are chasing are winning more matches. And spinners have a very good economy. Fast bowlers are taking more wickets, but the spinners have a very good economy. So I think, again, any team that wins the toss is going to bowl first. All right, so this is the pitch which played at day 1. The 2 games, second game was a high-scoring match. And probably, if I understand correct, you're saying the batsmen are not really applying themselves properly. The runs are there. And someone's got to break the mould. I mean, what's happening so far, particularly for Balochistan, I mean, their top 4 haven't scored 100 runs really between them. So, I mean, that's poor. They're not getting starts. You've got to get starts here. And a side is at the bottom of the table for a reason. You've got to look at that, and that's probably the reason. They're not getting starts to the bat. They're not getting away briskly. And if you get away briskly, then that's going to set the tone again for the rest of the guys. Imamul Haq, he's scored 14 runs so far. He's got to do far better than that for starters, as a captain as well. True. Well, the 2 captains are ready. We've got Bazid Khan. Let's find out what happens. Already with the toss, and Pindi Stadium has been slightly tricky in the way that it's played, not the normal pitch where you can really express yourself. We've got the 2 captains, Imamul Haq, Soeb Maqsood, Nadeem Arshid, match referee. I believe Imam has the coin.
Tails. Tails is the call. Heads it is. So Balochistan have won the toss. इमाम क्या करेंगे और क्यों? बाजिद भाई हम बॉलिंग करेंगे. इस पिच पे 155 इस दफ़ा है एवरेज स्कोर. स्लाइटली उस किस्म की पिच नहीं है जहाँ पिंडी को हम यूज्ड टू हैं. जी बस भाई देखें, ये वो वाली विकेट नहीं है जिस पे आप जो है थ्रू द लाइन जो है आप हिट कर सकते हैं. जो पास्ट मैचेस हुए हैं उसमें स्कोर जो है मेरे ख्याल से बाज़ औक़ात टीम्स ने 145 पे भी जो है काफ़ी जो है जीत भी सकती हैं. तो लेकिन मेरे ख्याल से 155 160 इस विकेट पे मेरे ख्याल से जो है अच्छा टोटल है. तो अब आपकी टीम नॉर्मली कम बैक करती है, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि टूर्नामेंट में ज़्यादा पीछे चले जाएं. बिल्कुल. पिछले 2 मैचेस में आई थिंक जो लैप्सेस हुए हैं कोशिश करेंगे कि ये चूँकि इतने हाई स्कोरिंग गेम्स नहीं, आई थिंक फील्डिंग बहुत अहम रोल प्ले करेगी. कोशिश करेंगे कि फील्डिंग में जो लैप्सेस हो रहे हैं वो ना करें और बॉलिंग थोड़ी और बेहतर करें. मैम आपको भी विक्ट्री की ज़रूरत है, क्या चीज़ इंप्रूव करने की ज़रूरत है? बस भाई देखें, ओवरऑल जो है हमारी बॉलिंग डिपार्टमेंट बहुत अच्छा कर रही है. मेरे ख्याल से हमें बैटिंग जो है वो थोड़ा सा जो है हमें थोड़ी सी और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेंगे. टॉप 3 को जो है एक लंबा खेलना पड़ेगा. तो मेरे ख्याल से ये जो है, और बाकी मेरे ख्याल से जो हमारी टीम की जो फाइट और जो बॉडी लैंग्वेज है मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छी है. वेब आपके मिडिल ऑर्डर पे बहुत फोकस है, ज़ाहिर है वो वर्ल्ड कप के लिए जाएंगे, तो इससे थोड़ा एडिड प्रेशर है इन 3 प्लेयर्स पे. आई थिंक एडिड प्रेशर तो नहीं है, बस ये है कि जो अभी लड़के हैं वो मिडिल ऑर्डर के, उन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए. आई थिंक अभी तक जो पिछले 2 गेम्स में मिसिंग पार्ट है वो एक इम्पैक्ट इनिंग्स नहीं आ रही बैट्समैनों से. आई थिंक वो एक अगर 60-70 रन की कोई इम्पैक्ट इनिंग्स खेलेगा तो आई थिंक वो इन पिचेस पे वो काफ़ी डिफरेंस मेक करेगा. आपकी टीम में कोई चेंजेस? एक चेंज हमने किया, इमरान रंधावा की जगह ज़ियाउल हमने फास्ट बॉलर इंक्लूड की. इमाम आपकी टीम में कोई चेंज? जी हमारी टीम में 2 चेंजेस हैं. खुर्रम शहजाद फूड पॉइजनिंग थी तो वो वापस आए हैं. हैरी भाई जो है, हारिस सुहेल जो है वो हैमस्ट्रिंग की इंजरी से अब वापस आए. तो ये दोनों चेंजेस हैं. और अकबर रहमान रेस्ट पे और आकिब जावेद रेस्ट पे. So the news out here from the center is that Balochistan have won the toss and have elected to bowl. Let's have a look at the two playing 11 now, starting off with Southern Punjab. A bit of a strange call that. They've left out Imran Randhawa, who scored a 50 yesterday, and they've added a bowler, Ziaul Haq. I'm just focusing on that middle order. Now, that middle order is the much vaunted middle order for Pakistan in the T20 World Cup. Kushto, Azam Khan, and also Maqsood. I mean, what have we got here? We've got 34 runs so far for Azam Khan. We've got 14 runs only for Maqsood. So they've got to really step up the gas here. And Kushto hasn't got going either. So it's got to improve dramatically from that. The middle order is really important. Let's have a look at their opponents today. Balochistan, again, the same story. The captain isn't really amongst runs. They've got 2 changes. Fast bowler Khurram Shahzad comes in and they bring in the experience of Haris Sohail. And one guy that is pulling his weight is Yashir Shah. He's going at just over 6 runs per over at the moment. So spin again is going to influence in this game, and I expect him to stand up as a senior player to make a bit of a difference. Can you pick out a winner? It's a little bit tough. I think Balochistan today. I want them to fire. I want that middle order to. In fact, I'm going to change at the last minute. I'm going for Southern. I want the middle order to fire for the last. To fire up today and really set a bit of a trend here. Cool. Thank you so much. All right, so here we are. Balochistan have won the toss, decided to field. On the other side of the break, match 7 waits to be.
रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में आज के दिन का पहला मैच बलूचिस्तान बनाम ATF सदर्न पंजाब। दोनों टीमों में तब्दीलियां नजर आ रही हैं। हारिस सुहेल जो कि फॉर्मर कैप्टन हैं बलूचिस्तान के, उनकी टीम में वापसी हुई पूरी तरह फिट होने के बाद, और खुर्रम शहजाद पहली मरतबा एक्शन में नजर आएंगे। ये दाएं हाथ से तेज बॉलिंग करते हैं। ज़ियाउल हक अपना पहला मैच खेल रहे हैं इस चैंपियनशिप में ATF सदर्न पंजाब के लिए, और हैरानकुन तौर पर इमरान रंधावा इस टीम में जगह नहीं बना सके, जिनने कल निस्फ सेंचुरी स्कोर की थी। तो आज के इस मैच में क्या कुछ हो सकता है, इन दोनों ओपनिंग बैट्समैन को किस तरह से नई गेंद के साथ पेश आना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जैन अब्बास हैं और उनके साथ ज़ीशान अशरफ, दो बाएं हाथ से खेलने वाले इफ्तिताही बैट्समैन, और मेरे साथ इफ्तिताही कमेंटेटर हैं मरीना इकबाल, पाकिस्तान की फॉर्मर क्रिकेटर। गुड आफ्टरनून मरीना। शुक्रिया तारिक, और एक बार फिर आज मौजूद हैं हम पिंडी स्टेडियम में। बलूचिस्तान ने टॉस जीत के पहले बॉलिंग का फैसला किया, और अभी तक जितने मैचेस हमें देखने को मिले हैं तारिक, ये ज़रूर वाज़ेह रहा है कि शुरू में बैटिंग साइड को ज़रूर मुश्किलात का सामना करना पड़ा। ज़ीशान अशरफ काफ़ी अटैकिंग प्लेयर हैं, और इनसे उम्मीदें भी आज काफ़ी होंगी बलूचिस्तान को। जैसे कि इमामुल हक ने बोला कि बैटर्स को थोड़ी और जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और उनका साथ देंगे जैन अब्बास। यहाँ 113 का स्ट्राइक रेट है, 91 इनका बेहतरीन स्कोर है। स्टाइलिश बैट्समैन है। दोनों मैचेस में इन्होंने अच्छी इब्तिदा की, लेकिन उसके बाद अपनी विकेट थ्रो की। और ये आपके सामने खुर्रम शहजाद, ये अच्छे फर्स्ट क्लास बॉलर हैं, गेंद को स्विंग करते हैं। हाल ही में पाकिस्तान सुपर लीग में भी नजर आए थे, कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी की थी इन्होंने शेख जायद स्टेडियम में। ये गेंद को स्विंग करने की बराबर अहलियत रखते हैं, और आज ये पहला ऐसा मौका है जब बलूचिस्तान को पहले बॉलिंग करने का मौका मिला है। पहले दोनों मैचों में पहले बैटिंग की थी और बॉलर्स स्कोर को डिफेंड नहीं कर सके थे, कम स्कोर को। खुर्रम शहजाद, काफ़ी लोग मुंतजर थे इनको एक्शन में देखने के लिए, आज इनको मौका मिला है। हमें काफ़ी वाज़ेह रहा है कि शुरू में बैटिंग में थोड़ी से इश्यूज होते हैं, बॉल थोड़ा सा ग्रिप करके आता है। अब देखते हैं कि खुर्रम शहजाद स्विंग का फ़ायदा उठा सकेंगे या नहीं। जी हाँ, और उसके लिए उन्हें अपनी जो सिग्नेचर स्विंग बॉलिंग है वो करना होगी। ये स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम के सिग्नेचर के साथ ये गेंद आपको नजर आई। अंपायर गफ्फार काजमी, उनने प्ले की कॉल की, तो पहली गेंद आने को है। ऑफ साइड में फ्लैश या गेंद उनसे दूर निकल गई, इससे वाइड का इशारा करना पड़ा। खुले ज़हन के साथ आए थे। वो याद है जब टूर्नामेंट का पहला दिन, पहली गेंद थी, तो इसी तरह इन्होंने ऑफ स्टंप के बाहर चौका लगा दिया था जैन अब्बास से। खुर्रम शहजाद का बेस्ट 3 विकेटें हैं 14 रन देकर। थोड़ा सा पिच को रीड करना पड़ेगा जैन और ज़ीशान को, क्योंकि एक अच्छा स्टार्ट यहाँ पे चाहिए सदर्न पंजाब को। पैड पर लगी और अंपायर ने फौरन ही आउट करार दिया। सदर्न पंजाब को पहला नुकसान उठाना पड़ा। यहां पर पहली गेंद पर इस तरह खुर्रम शहजाद की वापसी रंग लाई बलूचिस्तान के लिए। पिछला बॉल बीट हुए थे, बाहर निकला था, ये थोड़ा सा निप बैक किया अंदर, और फ्रंट फुट कहीं भी प्लांट नहीं हुआ, और एक आसान फैसला गफ्फार काजमी का, और आता ही खुर्रम शहजाद ने अपनी प्रेजेंस जो है वो शो की है। सदर्न पंजाब का पहला नुकसान, 1 पे 1 आउट। खुर्रम बगैर कोई रन बनाए पवेलियन वापस।
कप्तान सुहेब मकसूद को मैदान में उतरना पड़ा है, कि तवक्कुल से भी पहले 144 मैचेस खेले हुए हैं और ये 3,389 रन इन्होंने बनाए हैं। इनमें से कई अच्छी इनिंग्स इस मैदान पर भी खेली हैं, क्योंकि 5वां T20 है रावलपिंडी के मकाम पर, इसलिए पिच से, यहाँ के हालात से ये बिल्कुल भी नाआशना नहीं है। ये देखिए इन स्विंग पर अपने दाम में ले आए, पहले गेंद को दूर गिराया और अपना तवाज़ुन बरकरार नहीं रख सके शॉट खेलने की गर्ज से। ज़ैन अब्बास यहाँ सीधे बल्ले के साथ खेलना चाहिए था, लेकिन अब देर हो चुकी। अच्छा शॉट लगाया, गेंद डिफ्लेक्ट होकर आई। 2 रन के साथ अपनी इनिंग्स का आगाज किया कप्तान ने। अच्छी शुरुआत, पुरएतमाद लग रहे हैं सुहेब मकसूद, और आज भारी जिम्मेदारी होगी इन पे कि अपनी टीम के लिए अच्छे रन्स करें। सीधे बल्ले से खेला, आने दिया बॉल को अपने पास। जी हाँ, ये जो साथी बैट्समैन थे वो खुद नहीं बचा सके, और ये सुहेब मकसूद के लिए बेहतर हुआ, क्योंकि दूसरी सूरत में गेंद मिड ऑन के फील्डर के पास जाती। 2 फील्डर स्लिप में मौजूद हैं, हारिस और यासिर शाह, दोनों अच्छे स्लिपर हैं। ये खासा करीब करीब खड़े हुए हैं, क्योंकि पिच में यहाँ पर खासा बाउंस देखने को मिलता है, इसलिए हारिस कदरे डीप हैं, यासिर शाह उनके करीब होने के बावजूद आगे की तरफ। थोड़ा सा ग्रिप करेगा बॉल इस विकेट में, और जिस तरह की टेक्निक अभी तक सुहेब ने शो की है उसी टेक्निक से खेलना पड़ेगा। आने दे बॉल को। जहां हल्के हल्के आज बादल छाए हुए हैं यहाँ रावलपिंडी इस्लामाबाद के जुड़वा शहरों में, और आज जो पारा है वो तकरीबन 33 डिग्री। ये दोनों ऐसी टीमें हैं जो मुतलाशी हैं अपनी पहली कामयाबी की, इससे आज इनमें तब्दीलियां भी नज़र आ रही हैं। मुख्तलिफ अंदाज से भी ये खेलने की कोशिश करेंगे। दोनों मैचेस सदर्न पंजाब की टीम हार गई थी, बलूचिस्तान की कारकर्दगी जो है उनसे भी बदतर रही। हारिस की वापसी हुई, जो कि पिछले बरस कप्तान थे बलूचिस्तान के नेशनल T20 कप में। पिछले दोनों इवेंट्स में इनने क़यादत की थी। और अच्छी डिलीवरी इस बार छोड़ती हुई गई, विकेट कीपर ने अपने सीने के सामने कलेक्शन की, इससे बाउंस का अंदाजा हुआ। अभी तक स्पॉट ऑन रहे हैं खुर्रम, अच्छी लेंथ हिट कर रहे हैं, अच्छा बाउंस मिल रहा है, स्विंग मिल रहा है, आइडियल स्टार्ट है इनके लिए। एक बार फिर नजर डालते हैं, अच्छी सीन पोजीशन थी और शानदार कैरी कीपर के पास। जहां जिस रिस्ट की बात की जाती है, दरअसल वो है हुनर इनके पास, गेम को रिलीज करने का अच्छा इख्तियार है जब ये गेम करते हैं। और शानदार शॉट, इमामुल हक ने गेम की रफ्तार कम की डाइव करके, लेकिन दूसरा रन लेने से बाज नहीं रख सके ज़ीशान अशरफ को। इस पहले ओवर के इख्तिताम पर सदर्न पंजाब ने बनाए हैं 6। KTF सदर्न पंजाब के मिडिल ऑर्डर में 3 ऐसे बैट्समैन शामिल हैं जिन्हें ICC वर्ल्ड T20 में अगले माह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करना है। खुशदिल शाह, आजम खान, सुहेब मकसूद, लेकिन इन दिनों बुझे हैं। यहाँ इस पिच की मुनासिबत से वो खुद को ढाल नहीं सके हैं। किसी हद तक
मुझे लगता है कहीं ये दबाव में भी लगते हैं। जाहिर है खुले दिल के साथ उनको खेलना चाहिए। टीम में इनका इंतखाब पहले ही हो चुका है। यहाँ जुनैद खान बॉलिंग करने के लिए आएंगे सुहेब को। अच्छा आगाज जुनैद खान की जानिब से भी, थोड़ा सा कदम बाहर निकाला था सुहेब ने। जानते हैं कि स्विंग हो रहा है और मनूवर करना पड़ेगा क्रीज से। नई गेंद पर अच्छा पेयर है बलूचिस्तान के लिए, जुनैद खान और खुर्रम, जो कि नई गेंद करना जानते हैं दोनों तरफ। रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम की वही पिच है जहां पर पहले दिन मैचेस खेले गए थे और बलूचिस्तान की टीम सिर्फ 139 रन बना सकी थी दोपहर के मुकाबले में। यहाँ दरअसल क्यूरेटर्स भी बदल गए। पहले रियाज अहमद हुआ करते थे, फिर मोहम्मद अशरफ वो यहाँ से इस्लामाबाद क्लब चले गए हैं, वहाँ पर नया मैदान बनाया और यहाँ सरफराज अहमद हैं जो नए यहाँ चीफ क्यूरेटर बने इस रावलपिंडी स्टेडियम के। इस पिच का जो अंदाज है वो बदला बदला लग रहा है और सरफराज अहमद का ये ख्याल था क्योंकि ये पिचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए तैयार की गई थी। गैप में खेला है, खासा खुला मैदान मिला सोहेब मकसूद को। 2 रन का इजाफा उनके स्कोर में होगा। जस्ट फॉर मैन, आप ये QR कोड जो है इसको स्कैन करके मुख्तलिफ इनामात पा सकते हैं। इस ऑफर से फायदा उठाइए। इसी दौरान स्लिप निकाल ली गई है, अब शॉट मिड विकेट पे आ गई है और इस गेंद से पहले डीप स्क्वायर लेग पे फील्डर भेज दिया था फाइन लेग को ऊपर बुलाकर। इस शॉट के बाद कुछ चेंजेस नजर आनी शुरू हो गई फील्ड प्लेसमेंट में। अभी तक जुनैद की जानिब से बहुत ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिली और ये सदर्न पंजाब के इजाफी खिलाड़ी हैं। इनमें सलमान अली आगा नज़र आ रहे हैं, इसके अलावा उमर खान। सलमान अली आगा हाल ही में PSL में नज़र आए थे, अच्छे क्रिकेटर हैं, काफ़ी रन्स बनाए इन्होंने पिछले डोमेस्टिक सीजन में। ऑफ स्पिन करते हैं, इसके अलावा मिडिल ऑर्डर में बैटिंग करते हैं। इस पिच पर तो आप इनकी ऑफ स्पिन बॉलिंग से भी फायदा उठा सकते थे। मिडिल ऑर्डर जो है उनमें कहीं भी इनको खिलाया जा सकता था, खासी कारआमद खिलाड़ी हैं। जी हाँ, क्योंकि आजकल 2D या 3D क्रिकेटर्स का ज़माना है और अगर आप बैटिंग के साथ बॉलिंग कर सकते हैं तो आमतौर पर आपको नज़रअंदाज किया नहीं जाता। फ्लिक किया लेकिन रन 1 से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तो स्ट्राइक रिटेन करेंगे सोहेब मकसूद। 2 ओवर्स के बाद 9 पर 1। ये बलूचिस्तान की टीम इमामुल हक क़यादत कर रहे हैं, बिस्मिल्लाह खान, इनसे बड़ी उम्मीदें हैं। पिछले दोनों मैचेस में ये जल्दी आउट हो गए थे। हारिस सुहेल के आने से यकीनी तौर पर इनकी बैटिंग में किसी हद तक सख्त नज़र आएगी। एक स्लिप के साथ खुर्रम अपनी बॉलिंग जारी रखेंगे, लेकिन पिच अच्छी लग रही है। आज गेंद पल्ले पर आ रही है,
अच्छा मौका है सोहेब मकसूद के पास। वैसे भी दिन के वक्त ये सफ़ेद गेंद ज़्यादा बेहतर नज़र आती है। आउटफील्ड तेज़, आइडियल हालात बैटिंग के लिए। पिछले मैच की निस्बत काफ़ी अच्छा बैट पे आ रहा है बॉल। उस तरह ग्रिप होता हुआ हमें नहीं दिखा अभी तक। जितने भी शॉट्स लगे हैं उसमें बैटर को कोई भी मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ा। देखने में अच्छा लग रहा है। अब उसका फ़ायदा कितना उठाते हैं सदर्न पंजाब के बैटर्स, ये देखना होगा। लेग साइड में खेला है, फील्डर स्क्वायर के पीछे थे, नहीं पहुंच सकेंगे। पहला चौका आज के दिन का। दोनों बॉलर्स सोहेब मकसूद के सब्र का इम्तिहान ले रहे थे। बिल आखिर उन्होंने गेंद को बाउंड्री का रास्ता दिखाया। अच्छा रिस्ट वर्क, वेट किया बॉल का, आने दिया और बिल्कुल अपनी आंखों के नीचे अच्छा इस्तेमाल कलाइयों का किया और 4 रन हासिल किए। इस वक्त स्क्वायर लेग पर फील्डर डीप है। फाइन लेग को आगे खड़ा किया गया है और फ्लिक किया, फिर खुला मैदान मिला और गेंद दनदनाती चली गई। एक बार फिर ज्यादा कुव्वत सर्फ नहीं की और ये सरासर टाइमिंग थी सोहेब मकसूद की। लाइन और लेंथ अच्छी नहीं है खुर्रम की। ये काफी सॉलिड एरिया है, सिर्फ थोड़ा सा जैब किया और दौड़ती हुई गई गेंद बाउंड्री के पार। यहाँ इस पिच पर आप अगर जरा सा भी अपनी लाइन और लेंथ से हटेंगे तो गलती कोई गुंजाइश नहीं, खास तौर पर जब सोहेब मकसूद बैटिंग कर रहे हो। मुल्तान से ताल्लुक है सोहेब मकसूद का। 2013 में पहली बार ये पाकिस्तान की जानिब से बैनुल-अक़वामी क्रिकेट में आए थे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ मुत्तहदा अरब इमारात में खेले। 2015 तक ये टीम का हिस्सा रहे वाइट बॉल क्रिकेट में। उसके बाद उनकी कलाई पर चोट आई दौरान वर्ल्ड कप, उसकी सर्जरी हुई। लेकिन ये जो 2021 का साल है ये बहुत इनके लिए बेहतर रहा। पाकिस्तान सुपर लीग में मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे। उसके बाद जो है वो तनज़्ज़ुल शुरू हुई है। उसके बाद से इनका बेहतरीन स्कोर 19 रहा है PSL के बाद। दूर खेला विकेट कीपर बिस्मिल्लाह से 4 रन्स। इस बार बॉडी लाइन पर गेंद आई, ऑफ द पैड गई। स्ट्रगल कर रहे हैं इस वक्त खुर्रम। ये एरिया जो है वो कोई खास मदद नहीं देगा इन्हें और बैट की मदद से पेस इतनी थी कि बीटर को बीट किया कीपर को भी और उसके बाद बाउंड्री के लिए बॉल जो है वो बाहर। पेस अच्छी है, पेस जरूरी होती भी है, लेकिन पेस को सही जगह पे गिराना, उस लेंथ को एक्सप्लॉइट करना, लाइन को एक्सप्लॉइट करना ज्यादा जरूरी है T20 में। ये भी ऑफ द पैड गई थी, इससे अंपायर ने ज्यादा तवज्जो नहीं दी। गफ्फार कासमी ने इस अपील पर इस ओवर से 12 रन आए। 21 पर 1 सदर्न पंजाब। पाकिस्तान में आप PTV स्पोर्ट्स पर ये नेशनल T20 का बराह रास्त देख सकते हैं। शुमाली अमेरिका में विलो टीवी, जियो टीवी, UK यूरोप में जियो टीवी स्ट्रीमिंग पर भी दस्तयाब हैं। ये पिक्चर्स पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का YouTube चैनल है। पिछले सीजन की तरह इस बार
भी वहाँ पर डोमेस्टिक के मुकाबले आपके लिए दस्तयाब हैं पूरे सीजन में। और बैट पर लगी, पिछले बैट से टकराई थी, लेकिन क्या ये बैट से भी टकरा गई थी? लग यही रहा है कि बैट इन्वॉल्व था, रिप्ले में देखना पड़ेगा, लेकिन जिशान अशरफ को जरूरत नहीं इस चीज की। शोएब मकसूद बड़े अच्छा टाइम कर रहे हैं दूसरे एंड पे, अच्छी गेंद थी, स्कैटर्ड सीम थी और हो सकता है कि शायद डाउन द लेग जा रहा हो। यह अंपायर इमरान जावेद ने इशारे से यही मुत्तला करने की कोशिश की कि गेंद जो है वो स्टंप्स की लाइन के बाहर चली जाती। गैर रिवायती तर्ज के ये ओपनिंग बैटर हैं। जीशान ज्यादातर बैकफुट पर खेलते हैं। बीट किया पॉइंट को, अच्छा टाइम किया हुआ स्ट्रोक है, 4 रन बन जाएंगे। पहला चौका जीशान अशरफ के बल्ले से, जिसके लिए उन्हें 4 ओवर्स तक इंतजार करना पड़ा। अच्छी पुरइत्माद शॉट जीशान अशरफ की जानिब से, आउटसाइड ऑफ स्टंप थी, लेंथ और विड्थ दोनों मिल गई थी, सिर्फ बल्ले का फेस दिखाया और अच्छी टाइमिंग 4 रन के लिए। यहाँ क्योंकि देर से खेला इसीलिए यासिर शाह को बीट किया। बाउंड्री लाइन से खुरम के पास भी कतई मौका नहीं था। ऑन द खेलने के लिए गए लेकिन टाइम नहीं कर सके। इमामुल हक ये नए कप्तान बने हैं, खास से मुतहर्रिक फील्ड पर नजर आए। पहले 2 मुकाबलों में भी बार बार फील्डिंग में तब्दीलियां करते हैं। उनकी कोशिश यही रहती है कि इनके बॉलर्स विकेट हासिल करें। अभी तक बैटिंग में थोड़ा स्ट्रगल किया है बलूचिस्तान ने, बॉलिंग में काफी हद तक कंपोज नजर आए, फील्डिंग एफर्ट भी अच्छी रही। हवा में खेला, 4 रन, लाजवाब शॉट। इस बार लेंथ मिली और जाज़िब नजर। काफी खिंचा हुआ बॉल था और काफी टाइम मिल गया था इनफील्ड क्लियर करने के लिए। जिशान को बॉटम हैंड आया नजर में और बासानी मिड ऑन को क्लियर करके 4 रन हासिल किए। बैटिंग के लिए हालात साजगार लग रहे हैं, बॉलर्स को इसका अंदाजा अब होने लगा। लेफ्ट हैंडर्स के लिए मिड विकेट पर बाउंड्री भेज दिया गया बंगल जई को। स्क्वायर लेग पर पहले ही फील्डर हैं। अच्छा आ रहा है बल्ले पे, लेकिन थोड़ा सा अगर देखा जाए जिशान अशरफ ने जब ऑन द अप मारने की कोशिश की है वो उस तरह कनेक्ट नहीं हुआ। दूसरी तरफ स्वेब जो है वो बॉल को करीब आने दे रहे हैं। एक बार फिर खूबसूरती से खेला, फील्डर दबाव में हैं, बाउंड्री पर अम्माद बट रोकने से कासिर रहे। बैक टू बैक बाउंड्रीज जीशान अशरफ के लिए। इस बार सिर्फ और सिर्फ रफ्तार को काम में लाए। दाद देनी पड़ेगी जीशान की, कटर करवाया था लेकिन मध्यम हाथों से प्लेस किया गैप में और बासानी 4 रन हासिल किए। पेस ऑफ थी लेकिन टाइमिंग इनकी कमाल की थी। जुनेद खान ने जो दोनों डीप फील्डर्स हैं वो लेग साइड में ही खड़े किए थे जीशान के लिए, लेकिन फिर भी उन्होंने गैप ढूंढ निकाला। लेग साइड में ज्यादातर अपनी बाउंड्रीज लगाते हैं। दोनों बैट्समैन खास से सेट लग रहे हैं। इस ओवर में 3 चौके लगा चुके हैं जीशान। ये ओवर का इख्तिताम कैसे करना चाहेंगे? कट किया लेकिन उतनी आला फील्डिंग भी वहां पर
यासिर शाह थे जिन्हें चोट आई है। पिछले मैच में बड़ा शानदार कैच लिया था, इस बार बाउंड्री बचाई 34 पर 1। So suddenly, a bit of a spurt. 34 for 1 now. 4 overs gone. Junaid Khan getting some treatment. 3 fours in that last over. And most of them were short. That was nicely played. That was short as well. Just picked it up beautifully. And this was money for Jam, really. At 115 k's per hour, just worked it away nicely for another boundary. And that saved a boundary. And hopefully Yasir Shah is not injured, because he's got work to do for the team. Excellent fielder. But it seems like he has hurt his thumb. Oh, that doesn't look good. He's walking off. No, it doesn't. I mean, let's hope he's going to be okay. I mean, he's one that's been performing really well so far for Balochistan. He's been going at just a shade over 6 runs per over when he's been bowling, so he's kept things nice and tight. 6.1 actually, and of course there's more important things to worry about. Key player. So a little bit of an opportunity just to sit back and relax, take a bit of a breather. This is not something that happens very often in a T20 game. To pole T. So going at 8.5 runs of the over now. Maid Asif is into the attack, 37 years of age. He's a trier, that's for sure. 92 games now, keeps running in. Had a nice little head-to-head with Hassan Ali the other night. Scored some valuable runs. You don't see him angry much often, but against Hassan Ali there was quite intense exchanges. Generally, he's a very cool and calm customer. So we've got a couple of teams here today have got to play well for their own well-being for the rest of the tournament. Of course, for a couple of points also. They're both at the bottom of the table. Played 2, lost 2. Certainly don't want to have played 3 and lost 3. That's a nice little healthy crack right out of the middle of the bat. That has travelled for half a dozen runs. And these are very good signs for Southern Punjab. The captain, he's looking good. He's picked it up really well, read the length well. He's a great timer of the ball, doesn't like to hit it too hard. But once he has the timing, it crosses the boundary line very easily. He's gone to 20 runs now. Before this, he only had 18 in the first 2 games. And Southern Punjab has been a bit unlucky with the toss as well. We see the trend that the teams chasing are winning more matches. This is their 3rd time batting first. Squeezed away again. That's another boundary. So they're coming thick and fast now. Another display of timing by Sohaib Maqsood. You can just see how he just likes to time it, opens the bat up, guides the ball. Again, not trying to overhit it. So that wasn't far short of a half volley in the slot. It was a little bit wider, so he squeezed it and put it away for a boundary. The ball before that was very much in the slot, so he got underneath that and hit it for 6, which is what all the batsmen are looking for when they first come to the crease. And if they're feeling good in T20 cricket after they've been there for a little bit, and I guess when you've been there for some 14 balls before he hit the 6, that's a sign that he was doing okay. That's a bit of length. You can't do too much with that. I guess you've got to be a little bit more circumspect with that sort of length.
It is Umaid's first over. Don't forget to create an account at shop.pcb.com.pk. Merchandise store is now open, and get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup 21 shirt signed by the Pakistan T20 World Cup squad. Offer ends on October the 15th, and 5 lucky winners will be announced after that. That'll be called a wide, change down in pace, a little bit slower that time. And so here would be a little disappointing missing on that one, because the fine leg fielder was in. Extra runs, extra ball given, but it could have been easily hit for a 4. And he has been unlucky, got out on the very first delivery in the last match, 1 run out. So it's really important that the captain leads from the front. He started well. It's important that he can prolong this innings. Well, they're going at pretty much 10s, so this is a really good start. That's nicely fielded. I said right at the start of the build-up today that when you've got a couple of sides who aren't playing well, it's up to the senior players to make sure they stand up and set a tone. And Sohaib Maqsood has got most number of sixes in the tournament history, 92 sixes in 67 innings. And that's why he has been selected for the World Cup T20. Now that's the toe into the bat, so it hasn't travelled very far. This should be out. It is out. Goodness me. He's thrown that away. He was hitting the ball nice and crisply, just looking good. Umaid was struggling, and suddenly he's dismissed. You've got to capitalise. Once you get started, you've got to capitalise. And this was there to be hit, but he was away. He was playing away from the body. In the end, just threw his bat there, and a comfortable catch, and he knows that he has thrown his wicket away. And maybe the chances of Southern Punjab. Maqsood ends away for 24 off only 19, 46 for 2. Yasir Shah has had a little bit of handiwork done. Right, so we've got a new batsman now, Hassan Khan. Now, I'm a little bit bemused by Hassan Khan coming in now. 22 years of age. I don't understand why Kushtil or Azam Khan's not come in. They're the guys that are expected to be in the middle order in the World Cup. T20 game, I mean, this could happen in the World Cup. Surely if you're a class player, which clearly they are, they've been selected. Yes, they haven't scored runs so far, but get out there and bat. Get out and grab the opportunity. The surface is good. It's 30-odd degrees, 32 degrees expected today. It's nice and warm for the bowling side. Get out there and bat. Goodness. Absolutely. You might have to face 15 overs. You might be 46 for 3, not 2. Think of a lot of top batsmen around the world who actually want to get out there at the start of the 20 overs, not wait for any more to fall. Let's look at the dismissal. The important thing is the fact that he had to reach for it and hit the bottom of the bat. However, he could have made allowances for that. Wasn't that wide. And Umaid Asif giving the important breakthrough, important wicket of captain Sohaib Maqsood, the danger man, and that's why the captain is so happy.
Imran Randhawa has been rested. Hassan Khan promoted up the order. This is the first time he's batting at number 4. Nicely played. Little punch down the ground. Got one over. Picked up a wicket. That's the run out of Sohaib Maqsood in the last match. This is how Sohaib Maqsood has got out in this series. First ball, Nick Rizwan taking a great catch there, and this was the weight shifting to the leg side. He was away from the shot. Easy catch. So his woes continue. He's got to turn it around. He's the captain. He's got to make sure that his chin's up when he gets back to that dugout. And more importantly, gets some runs in this tournament. Solongo is player of the tournament, the PSL, so we know he's got the ability. Nice little punch again, this time on the offside from left-hander. Right, here we go. Here's the Osaka question of the day. What was the highest team score in the national T20 2020? 21. Answer this question on www.fb.com/osaka.batteries and get a chance to win exciting prizes. What happens with these kinds of promotion? In this match, Hassan Khan has been promoted. In the last match, Imran Randhawa, who has been rested today. So one thing is that you're not having a consistent middle order for this tournament. And the other thing is that your best batters are not playing most deliveries. So Azam Khan, Khushdil Shah, who will be given the big responsibility of rescuing the middle order in T20, World Cup T20, they are not coming and facing most deliveries. Plus, I think more importantly, you can get a little bit of time to take a little bit of effort to get the pace, the track, get used to the bowlers, and then you can go. You're naturally an aggressive player. That's why you're in that middle order. That's why you've been selected to do it, that sort of job. If you get up there a little bit earlier, you've got a little bit more time to get in. That's a very good over. That is really good work. 4 from it, 50 on the board, 50 for 2 it is after 6. More than half of the 50 runs that the ATF Southern Punjab have scored has been in boundaries. Signifies the power play is done. Normally means there's going to be an introduction of some spin. Not too many spinners around the world like to bowl inside the power play when only 2 are allowed outside. Some can do it. Ashish is going to have a go. That's good news. As I said earlier, he's been really good so far, just going at 6 runs per over in this edition. It's good to see him back on the field. He went earlier, went outside to get some treatment for his thumb. You can still see that he's shaking his hand. And this is the injury. This is how he got hit on the thumb. Good effort there. He's always giving his full effort in the field. Good commitment, but hopefully that would not trouble him too much.
Might have been just on the point with a bit of luck, I guess. No, it wasn't, just there. Cries of catch it straight away. The Suhop is caused dramatically. He's got no pain. There's no pain in that thumb whatsoever. It suddenly disappeared. He's picked up a wicket first ball. And ATF Southern Punjab are in trouble again. Losing the wicket of Zishan. This time he wanted to take on experienced Yasir Shah on the very first delivery. Easy catch by Umaid Asif. And Yasir Shah, he's definitely in no pain. And someone could explain that shot to me. I don't understand that at all. Ashraf goes to 18. 50 for 3 now. Kushtil now. Kushtil Shah, strike rate of 135. 26 years of age. I hope he plays well. Let's hope he gets some runs here. They certainly need some runs to Southern Punjab. Pretty weird dismissal, this. A little bit of a loosener from Yasir Shah. He couldn't believe his luck, I think, when he turned around and realised that Umaid did not have to move at all. As far as the number is concerned, this is the spot for Kushtil. Number 5, he's got a century, the fastest century he's got at number 5. So he should be comfortable and he knows exactly how to take the team out. Yasir Shah is going to just rush things a little bit now, get through this over pretty quickly after picking up a wicket first ball. That was a little bit more flighted. Really good stuff this from Yasir Shah. Spinners have been really effective so far in this edition of the National T20. A little bit shorter. Just a check shot really, just in case there was someone down there, I think, more than anything. Didn't want to give it the full flow in case there was someone camping a deep backward square leg. There wasn't. He should have realised that, I guess. Short pitch delivery, a rare occasion in this over from Yasir Shah, and well dealt by Kushtil Shah. Important boundary. They needed this boundary in the over. They have been going 7.5 plus. This will help them take the run rate up. And a single to Kushtil to retain the strike. So an important wicket that for Yasir Shah. Also just going for 5, 7 gone, 55 for 3. Exactly what Balochistan wanted, actually. The wickets have fallen, so suddenly there's an opportunity to get the spinners from both ends just after the power play, and both these batsmen haven't got going yet. They've only just arrived, so it's an ideal situation after winning the toss and electing to bowl first. Good proactive captaincy from Imamul Haq. Kashif Bhatti introduced, even though Ahmad only gave 4 runs.
It's good captaincy that he's changing the bowlers, not letting the batters settle. We'll see how Hassan is going to play through these middle overs. ready रहना शाह काशिफ Because there's a bit of purchase around the place, the batsmen are not going to feel totally comfortable because they've just arrived. So they're going to be in a little bit of a defensive frame if the ball's in the right areas, which then is going to allow the spinners to get through the overs quickly from both ends. Or take a risk. Don't tell me that's another one. It is. There are too many wickets being thrown away here. This is far from ideal from a side that has played poorly so far and played so well last year. And good change by Imamul Haq, bringing Kashif Bhatti. Khushdil Shah trying to use his feet, but intelligent bowling. He got the length back and a very good catch. Safe hands by Junaid Khan. Kashif Bhatti outsmarting Khushdil Shah. Straight into the attack, and he picks up a wicket almost immediately, and it's a big wicket. It's an important wicket. Goes for only 6, 57 for 4. Azam Khan now striding to the crease. He's the third of that middle order we've been talking about. A little bit of a chat to Hassan as he went past him. Strike rate 146. Well, here's his opportunity. He's got to settle in first, though. Not even 8 overs completed, so there's still plenty of time left in this innings. Seems like Junaid Khan's walking off now. Let's have a look and see what he did. It might be a bit of a grass burn, perhaps, after taking the catch. It was a very good catch. It was a poor shot. I think maybe he hit the advertising. It's like hitting sandpaper sometimes. Exactly. Right, so 57 for 4. Run rate at under 7.5 at this stage. Work to be done by Southern Punjab. And whether Hassan Khan and Azam Khan can make some kind of partnership is going to decide the fate of ATF Southern Punjab, because this pair, the partnership will be very crucial. And that means they've got time. It's as simple as that. You're right, Sana. That means they've got time now to just sort of work the ball around a bit, because they know they've got to go very deep and go deep together here. Sounds a bit weird going deep in a T20 game, but anyway, they have to. Brilliantly bowled. Superbly bowled. Picked up a wicket and went for only 3. 8 gone, 58 for 4. जल्दी बहुत ज़रा जल्दी करेंगे शाबाश शाह यासिर भाई हाँ ठीक हो इधर ही
8 ओवर्स का खेल मुकम्मल। सिचुएशन कुछ वैसी ही है सदर्न पंजाब की जो पहले मैचेस में रही है। मिडिल ऑर्डर कोलैप्सेस। अभी जो बात कर रहे थे माइक हेजमन और सना, उसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि टाइम बहुत है इन दोनों बैट्समैन के पास। ठीक है। ये वो विकेट जो कैच लिया गया काशिफ के पहले ही ओवर में, इसी में थोड़ा बहुत ट्रीटमेंट के लिए गए हैं जुनैद खान। टाइम काफी है इनके पास। तो 10 ओवर का खेल भी नहीं हुआ। और सिकंदर, इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो अभी तक आउट हुए हैं प्लेयर्स, उसमें से 2 पाकिस्तान के लिए वर्ल्ड कप के मिडिल ऑर्डर में, खुशदिल और सुहेब। वो टैलेंट तो बहुत है लेकिन टेम्परामेंट नहीं नज़र आ रहा इस वक्त। टपाल टी जो है एंजॉय कर रहे हैं लोग, और यहाँ हम भी एंजॉय कर रहे हैं। ठीक है। अच्छा प्लेटफॉर्म है यहाँ, मौका है आजम के लिए टू गेट बैक इनटू रिदम, और ये कर सकते हैं क्योंकि उनके पास इसके बाद 11 ओवर्स बाकी हैं। मैंने कहा और ये कुछ उल्टा ही हो गया। बॉटम एज ले बैठे और अपने आप से काफी नाराज हैं। तेज गेंद था, कट करने जा रहे थे और बॉडी से काफी करीब भी था। ये एक्सपीरियंस है यासिर शाह का और ये प्रॉब्लम्स हैं एटीएफ सदर्न पंजाब की। आधी टीम डग आउट में चली गई है। थोड़ा सा सरप्राइज है आजम खान इस डिसीजन से, और कीपर तो फौरन ही बिस्मिल्लाह खान ने इस चीज को कंफर्म कर लिया था कि एज लगा है, लेकिन आजम खान नहीं, खुश नहीं। और खुश होना भी नहीं चाहिए। अच्छा बाउंस मिला यासिर शाह को और एज कर दिया आजम खान ने, और ये 61 पे 5 और तमाम तर जो है हमारी वर्ल्ड कप स्क्वाड का मिडिल ऑर्डर यहाँ पर है। बॉलिंग का फैसला सही साबित हुआ अभी तक इमामुल हक के लिए। उनके बॉलर्स और उनकी फील्डिंग से कोई शिकायत नहीं, बस बैटिंग डिपार्टमेंट में इनको कुछ एक्स्ट्रा करना है। आमिर यामीन आए हैं। ठीक है यासिर भाई। जी बहुत आला यासिर भाई, बहुत आला। चलो बॉय। और अब इन 2 बैट्समैन पे बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है कि ये, जैसे कि सना और माइक हेजमन कह रहे थे कि डीप बैट करें और लंबा लेके जाएं आप खेल को और आखिर तक, क्योंकि इसके बाद नंबर 6-7 के बाद आपके बैट्समैन भी जो हैं वो टेल एंडर्स आने शुरू हो जाते हैं। हसन अच्छे बैट्समैन हैं, अच्छा कर सकते हैं, पोटेंशियल है, टैलेंट है। बड़ा शॉट, चांस लिया है और हासिल हो जाएंगे उनको मैक्सिमम। यहाँ ये प्लॉय भी अच्छा है हसन और आमिर यामीन को। अगर ऑपोजिशन की पास लेके जानी है फाइट तो ऐसे शॉट्स तो लगाने होंगे जहां अपॉर्चुनिटी हो। थोड़े फुलर बॉल कर बैठे यहाँ काशिफ, बल्ले के नीचे आ गया बॉल। जी हाँ, अच्छी शॉट थी, डाउन द विकेट आए और बहुत ही अच्छे लगाया।
यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा क्योंकि अक्सर हम ये देख रहे हैं कि बैट्समैन एक या दो छक्के लगा के अगली बॉल पे आउट हो जाते हैं। काशिफ ने बड़ी उम्दा बॉलिंग की थी पिछले मैच में भी। वही वाली बात है कि रन इतने नहीं दे पाई उनकी बैटिंग साइड। ये वो विकेट है, यासिर शाह ने आजम को आउट किया। इमीडिएट रिएक्शन है बॉलर और कीपर का, लेकिन आजम जो है वो सरप्राइज है और उनके हिसाब से उन्होंने बॉल को टच नहीं किया, शायद ऐसा ही लग रहा है। जी हाँ, अच्छी ब्रेक भी मिली, बाउंस भी मिला। आजम शायद बाउंस से भी सरप्राइज हो सकते हैं क्योंकि काफी बाउंस मिला उस बॉल पर यासिर शाह को। क्योंकि विकेट कीपर ने तो बिल्कुल कैच पकड़ते ही उनको पता था कि आउट है, उनके दिमाग में कोई शक नहीं था। दस ओवर्स का खेल मुकम्मल हो गया। 69, 5 खिलाड़ी आउट। शाबा बॉयज बटी लेट थोड़ा सा जल्दी प्लीज। 6.9 की औसत है इस वक्त। इसको ऑब्वियसली ऊपर तो लेके जाना ही पड़ेगा, कहीं ना कहीं 10 के ऊपर जाएं, टारगेट में रखें 160 मिनिमम। ओह, ये मिसफील्ड नजर थोड़ी सी देर के लिए शायद हटाई गेंद से और इसका खमियाजा भुगतना पड़ा जुनैद खान। जी हाँ, 71 पर अब स्कोर पहुंच गया। 2 रन इन्होंने हासिल किए और मिसफील्ड की। और जब आप टॉप पे होते हैं तो आपको किल के लिए जाना चाहिए और किल में यकीनन फील्डिंग भी एक एस्पेक्ट होता है, बहुत जरूरी। यासिर शाह बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे, चेंज कर दिया, जुनैद खान को डीप में भेज दिया। इस बार ज्यादा नोटिस किया है कि यासिर फ्लाइट ज्यादा दे रहे हैं बॉल को। पहले तेज फ्लैट ट्रेजेक्टरी से कराते थे बॉल। स्पिनर्स के लिए से है यहाँ, हमने देखा है अभी तक मैचेस में पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अपना रोल बड़े अच्छा निभा रहे हैं स्पिनर्स। लो रहा गेंद, एक बार फिर अपील और आउट, सेम रिजल्ट। बड़ी विकेट, आमिर यामीन, यासिर शाह की डबल स्ट्राइक। बहुत ही शानदार बॉलिंग। इस बार गेंद थोड़ा सा तेज था लीना। जी हाँ, बिल्कुल, फ्लाइट थोड़ी कम थी, फ्लिपर था और रीड नहीं किया और एज देख बैठे और ये विकेटें एक के बाद एक गिरती जा रही हैं और यासिर शाह को जब विकेटें मिले तो वो बहुत ही डिफिकल्ट मुश्किल बॉलर बन जाते हैं। 71 पर 6, 3 रन्स बनाकर आउट हुए आमिर यामीन। 8 बॉलें उन्होंने खेली। यासिर शाह 10 रन देके 3 खिलाड़ी आउट कर चुके हैं। पूरी तरह से हावी हुआ है इस वक्त बलोचिस्तान ATF सदन पंजाब पे। ज़ियाउल हक जो आज के वाहिद चेंज हैं सदन पंजाब की टीम के, वो आए हैं बैटिंग करने। इन दोनों कैचेस को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। बिस्मिल्लाह खान की बड़ी उम्दा कीपिंग है, खासतौर पे जो अंडर एज लगा था ये आमिर यामीन का,
टफ कैच होता है, इतनी हाइट नहीं थी उसकी। ठीक है ठीक है ठीक, शाजी शाह शाजी। इसको फिर देखेंगे। फिलहाल पहली गेंद का सामना करेंगे जियाउल हक। और 4 रन से ऑफ द मार्क हुए। विकेट्स के सामने से स्वीप किया पहली ही बॉल को। ऐसी कुछ स्ट्रीकी बाउंड्रीज की उनको ज़रूरत है। बॉल पूरी तरह उनके बैट पे नहीं आई, लेकिन फिर भी 4 रन हासिल किए स्वीप करके। और कुछ डिसेंट अगर स्कोर पहुंचाना है 140 तक, तो फिर एक पार्टनरशिप की भी ज़रूरत है और थोड़े से लक की भी ज़रूरत है, और जो कि रहती ही है। लक की ज़रूरत बैट्समैन को रहती है। सही है शाजी, राल विकेट। ये शाजी। देखते हैं एक बार फिर बिस्मिल्लाह खान की अच्छी कीपिंग। अंडर है जो बड़ा शानदार कैच लिया है आमिर यामीन का। तेज गेंद था, फ्लैटर बॉल था, उठा नहीं ज्यादा। ये देखें, ये स्लाइट डिफ्लेक्शन होती है। ये आपके ग्लव में आपका अक्सर ऐसा होता, सही तरह गेंद आए ना, वेबिंग पे लग जाए, लेकिन बहुत उम्दा। जी हाँ, नीचे भी अच्छे लो रहते हैं, जिसने मदद मिलती है स्पिनर को कीप करने के लिए। जल्दी उठते नहीं है, नेचुरल कीपर है। 77 पर 6। एक और बड़ा जबरदस्त फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फैसल अकरम। बड़ी शानदार बॉलिंग की है। लेफ्ट आर्म स्पिनर पाकिस्तान में बड़े अरसे बाद देखने को मिला है, और उन्होंने कल रिजवान की जो विकेट हासिल की, कॉन्फिडेंस बूस्टर। दोनों तरफ बॉल स्पिन करते हैं और टाइम के साथ साथ कंट्रोल बढ़ता जाएगा। अभी इनकी उम्र 18 साल है गालिबन। मुश्किलात में इस वक्त सदर्न पंजाब की टीम। अच्छी शॉट इस दफा, लेकिन एक ही रन हासिल होगा मिड विकेट पे। हसन की बैटिंग कैपेबिलिटीज अच्छी हैं। बहुत दफ़ा मैंने इनको देखा है कि ये मुश्किल मौके पे रन बनाते हैं, जो कि एक बहुत ज़रूरी एलिमेंट है। हम यही डिस्कस करते रहते हैं कि प्रेशर में जो लड़का रन बनाता है, चाहे वो मिडिल ऑर्डर हो या टॉप ऑर्डर हो, वो प्लेयर है, उसकी बात है कि जो प्रेशर को झेल सके और रन बनाए और रिस्पॉन्ड करे। खुरम शहजाद की जो इंक्लूजन की है बलूचिस्तान में, श्योरली बहुत अच्छी इंक्लूजन है। कल मैं ये सोच ही रहा था, बात हो रही थी हमारी, कि खुरम शहजाद ने काफ़ी अच्छी इंप्रेसिव परफॉर्मेंसेज दी थी लास्ट ईयर भी, और अच्छे बॉलर हैं। डेल स्टेन की याद आती है इनको देखते हैं। इनका जो एक्शन है, जिस तरह डिलीवरी स्ट्राइड में है इनकी, है झलक है, बल्कि काफ़ी ज़्यादा। आप गौर करें, देखें। सिकंदर, आपने इतना बड़ा कॉम्प्लीमेंट दिया उनको, डेल स्टेन से मिलाया। होप कि वो किसी तरह ये बात सुन ले और इससे उनका कॉन्फिडेंस बढ़े। नहीं, आई एम श्योर उनको पता होगा। मैं वाहिद आदमी नहीं हूँ, बहुत से लोगों ने इनको कहा होगा इनका है ऐसा स्टाइल, और इन्होंने भी बताया होगा। आज खुश है फैसल अभी तक की परफॉर्मेंस से, मुतमईन है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, 2 टीमें जो ढूंढ रही हैं अपने लिए पहले 2 पॉइंट्स टूर्नामेंट में, वो पीछे सबसे आखिर में नहीं रहना चाहती। ओ लीडिंग एज, लेकिन लकी रहे गेंद किसी फील्डर के आसपास नहीं आई। थोड़ा सा अपना रोल समझना पड़ेगा जियाउल हक को यहाँ पे, क्योंकि हसन बैटिंग कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा स्ट्राइक उनको दें
क्योंकि ये जो प्रोजेक्टेड स्कोर्स आपको दिख रहे हैं ये नाकाफी हैं। अगर आप 10 रन फी ओवर भी करें तब भी नाकाफी है। लेकिन इस वक्त इस सिचुएशन में तो आप ग्रैब करेंगे ही। 150 पे भी आप कहेंगे ओके फाइटिंग टोटल है, चले अपने चांसेस लेते हैं बॉलर्स के साथ। लेकिन ओवर्स पूरे खेलना जरूरी है, 20 ओवर्स जरूर खेलें। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर ऐसा हो जाए तो बड़ा अच्छा होगा। 147 का जो अभी प्रोजेक्टेड स्कोर दिखा रहे थे, अगर इतना भी बन जाए तो वो भी अच्छा फाइटिंग स्कोर है इस विकेट पे, जहाँ जिस तरह के यहाँ पर एवरेज फर्स्ट इनिंग्स टोटल चल रहे हैं तो उसके अराउंड ही है वो। सिंगल के साथ हसन स्ट्राइक रखेंगे। 82, 6 खिलाड़ी आउट, 12 ओवर्स का खेल मुकम्मल। शादी Yasir Shah into his 4th over. Easy. Good try, me. We've seen again leg spinner. The pitch assisting him slightly. He's been able to pick up wickets, and that's really rocked ATF Southern Punjab. Still, they are not able to time him properly. He's bowled really well today. आजा बहुत आला शादी। बढ़ा यासिर भाई। Yasir Shah sliding down the ground straight to the fielder. Ishan Ashraf. Easy शादी, easy. Me. बहुत आला। And Azam Khan bounced a little bit more. And again, that one didn't bounce as much. So, bit of variation in bounce, and that's been worked by Yasir Shah and it's been in his favor. And it has meant that ATF Southern Punjab haven't had a partnership which has extended this run rate for a long time. So the problem now remains that you've still got 7 overs. Do you now hold back and think we have to bat through the overs? 155 is the average score on this track in this tournament. So if you want to get to 155, you need to go at 10 and over from here on in. And the problem with their partnerships have been the only batter who made a 50 last match has been rested, Imran Randhawa, who was promoted up the order. Easy. 85 for 6. $18, $24, $18. Those are the double figures. Yes, you want to be fielding first always, but I think 160, 170 you're in the game, but you have to need
bit of game awareness for that. It's not a type of pitch you've seen in this tournament, not a pitch where you come on and start hitting on the up and get those boundaries flowing. One of your players, well, it's almost like you have to invest in a player who'll bat through the innings, an anchor maybe. But saying all that, Sanai, it's good preparation for UAE. UAE, we know, is also a fact that you don't get big scores until and unless one of your players sort of bats for a long time, even in T20 cricket. So the anchor's role in the T20 World Cup will be a big one. Yes, and that's why these 20s and 18s won't help the cause. Especially in the top 4 or 5 batters, one of them will have to make, or 2 of them will have to make a big 50. And we have seen that Mohammad Rizwan, yesterday Sarfaraz Ahmed, they were able to take the team home because they were able to score big. So these 18, 20s, they won't matter. And nowadays, the data suggests that you need to be hitting a lot of boundaries. You need to be hitting 6s every other over. But then you look at where the T20 World Cup is happening and you look at the scores there, which actually aren't normal T20 scores. It's not as if you're going to get 180, 200 in the UAE. Sharjah maybe, but Dubai and Abu Dhabi, it's difficult to get those scores consistently. Outside edge, brilliant catch. Bit of swing, bit of shape, but Bismillah Khan with a stunner. And it was Ziaul Haq who has replaced Imran Randhawa, who was the main batter for them, and Ziaul Haq was not able to make much impact. An excellent catch, very good ball by Ahmad Bhatt, an excellent take by Bismillah Khan. Wickets keep tumbling. Is Ziaul Haq out for 9? It's 86 for 7. Ilyas walks in. Ahmad Bhatt normally gets the ball to shape, and even that delivery is the 14th over. He's still got the ball to shape away. And that's why the captain has given him a slip. Imamul Haq has changed the bowlers really well. He has used 6 bowlers. And apart from Yasir Shah, he has got all the options for the next 7 overs. Bit of extra bounce, but you look at his release and his seam position, it's pretty upright, so he will get the ball to just seam away or swing away. What a catch that is. Low to his right, made sure he followed it till the eyes on the ball. Even when he caught it, he's looking at the ball. That is brilliant. Absolutely. Great technique from Bismillah Khan. His head was low. And when he hit the ground, his elbow was also flat. It was not hitting the ground. Excellent catch.
catch, and he knew it straight away. The celebration told you that he enjoyed that. Balochistan team are having a very good time in the field. Won the toss, selected to bowl, 86 for 7 the opposition. Just a couple of runs off the 14th and a wicket, 87 for 7. Umayyad Asif into the attack. Yeah, Sana, so the discussion was looking at the World Cup. You look at the conditions that you're playing in, and I would suggest that one anchor at least, maybe, well, 1.5 anchor, another anchor who can probably up the ante as well, but at least one player who can bat through innings. Pakistan, well, Babar and Rizwan both can do that role, and over the years in the UAE, if somebody does that, the other players then bat around him and they get to a big score. It's very rarely that you get 5-6 players getting quick 30s or 3-4 players getting quick 20-40s to get to you a big total. So the role of the power hitters, yes, we know it's all about power, but the role of the power hitters in the UAE especially is slightly reduced. I don't know how you see it. Yes, and around the world, the power hitters have the ability to adjust gears. We see, yes, they can accelerate the innings, but they can also rotate the strike, build partnerships, and that's what these players either have to learn very, very quickly, or we might have to look at a different strategy. And this is a chance, and it's gone. Every hit going to the fielder, it's all been about wickets for Balochistan, and this is Umayyad Asif now in the act. Slightly slower, didn't get the timing back, twisting in his hand, but it's a good catch. And the celebration, not seen the Iron Man shirt, but the celebration is still there. Arslan Khan out for 19, it's 88 for 8. Faisal Akram, well, he wouldn't expect it to be batting today or batting in the 15th over. And that's why he's here. Umayyad Asif using the variation, splitting the fingers there, making sure that the ball reaches Hassan Khan a bit later than he expects. A good catch in the deep. It's very interesting selection from ATF Southern Punjab. They rested Imran Randhawa. Here's the look at the wicket again. That slow variation. Hassan Khan trying to muscle it away.
but there was not much pace. So there was interesting selection. They have rested Imran Randhawa. They had the option of Salman Ali Agha, who can bat. They have got the option of Tayyib Tahir, but they replaced him with Ziaul Haq when they are struggling with batting. That first match that ATF South Punjab played, they got to 175 and almost won the game, and at the back end it was Anwar Ali and obviously Khurram Manzoor who got GFS Sindh through. So in the second match they struggled with the bat. So the change that they've made is thinking that they've got powerhouse in the batting, so they need more bowling. And I'm just thinking why that change is made. Maybe they're still backing their big top order or the strong middle order. You've got Zishan After Zain, Abbas, who all strike the ball really well. Saib Maqsood, Khushdil, Azam, Amir Yamin is in good form as well. Even Hassan Khan. So the firepower in the batting is there. And they just thought maybe that they want somebody who can bowl at the back end like Ziaul Haq. That's the only reasoning I can think of. So it's the last ball of the over. The over's done, so I won't let you answer. We'll come back to that. 89 for 8. For 8, 5 overs, 30 deliveries remaining. Muster up maybe another 20, maybe another 30. Have a good over. Still, you've got to give yourself a chance. Get to 130, maybe 140. Balochistan have been very good with the ball, but the wicket keeping has been exceptional. Bismillah Khan has had a great day behind the stump. These are all really good catches. Standing up to spin, first the top edge, then the inside edge, and then to top it all off, a diving catch to his right. So everything's working in order. And I reckon all these catches were very difficult. Don't underestimate how difficult those catches off Yasir Shah were. Well, that was a pretty simple catch. And Haris Sohail not wearing any sunglasses to aid him against that sun. And he was holding his hand up because he thought he couldn't see the ball. And at international level, when you have played so much cricket, you need to have that gear with you. This is not good. In the air, this time goes high, high. Point gets underneath it, juggle, but taken in the end. And the problem continues for ATF Southern Punjab. Mohammad Ilyas gone. And Ahmad Butt takes another wicket. Very well directed ball. He was trying to take it to the leg side. Top edge again. A juggle there. Didn't know which way to catch it, but in the end did well. The substitute fielder there for Balochistan. Mohammad Ilyas gone for 3. Southern Punjab 89 for 9.
Nasim Shah. 89 for 9. Things looking pretty bleak. The opportunity floored in the last ball, but this one went pretty high into the sky. Looked comfortable underneath it. Made sure that he caught it high above his eyes, so had the chance to take it with the bobble. Slip in pace. With Faisal Akram on strike, this can be a wicket maiden by Ahmad Butt. Southern Punjab might become the team that will have the lowest score and gets out the quickest. It's just the 16th over. Very good turnaround from Balochistan. Single of the last delivery. After 16, Southern Punjab 90 for 9. मायूस कुन तस्वीर है एटीएफ सदर्न पंजाब की बैटिंग की। आप देख सकते हैं बेहतरीन स्कोर सुहेब मकसूद का रहा, जिन्होंने 24 रन बनाए। हसन खान उसके बाद डबल फिगर में आ सके। और आज दोनों स्पिनर्स ने लाजवाब बॉलिंग की। काशिफ भट्टी ने आजम खान को चलता किया, 3 विकेटें हासिल की। यासिर शाह ने अभी स्पिनर को ही बॉलिंग कर रहा है फैसल अकरम, जिन्होंने काफी बरसार अपने बनाए हैं। अच्छा तारुफ अपना पेश किया है इस तर्ज के क्रिकेट में। और अब सदर्न पंजाब की टीम नेशनल T20 कप में अपने कम तरीन स्कोर का जो रिकॉर्ड है, लगता है उसको भी आज तोड़ देगी। इसे बहुत ज्यादा फाइन खेल दिया। 4 रन के लिए हारिस सोहेल आए थे, लेकिन गेंद उन्हें बहुत पीछे छोड़ गई। अच्छा शॉट खेला, नसीम शाह ने इम्प्रोवाइज किया। अब तो रन्स बस जैसे भी आए बस आने चाहिए, ये है इस वक्त फॉर्म मिला और ये काम भी करेगा एटीएफ सदर्न पंजाब के लिए। जिस तरह भी आप चाहें खेलें, बस रन बोर्ड पर आते जाएं। अभी तो 3 फिगर के लिए जंग जारी है। 95 हो गए, 9 खिलाड़ी आउट। 132 कम तरीन स्कोर है सदर्न पंजाब का, जो कि पिछले बरस उन्होंने बनाया था केपी के खिलाफ यहीं पे। इस बार रिवर्स स्वीप करने के लिए गए, लेकिन कनेक्ट नहीं कर सके। यही अब दिलचस्पी है कि ये दोनों टेल एंडर्स जो हैं, क्या इस बात को यकीनी बना सकते हैं कि एसपी पूरे ओवर्स खेल ले। अच्छा शॉट लगाया, लेकिन रन एक ही मिलेगा। फैसल अकरम आ गए तारिक साहब स्ट्राइक पे। बड़ी अच्छी बॉलिंग की है इन्होंने इस टूर्नामेंट में। मुझे बताया हमारे स्टैटिस्टिशियन ने अंडर 19 वर्ल्ड कप भी करीबी है, वेस्ट इंडीज में खेला जाएगा। क्या लगता है आपको, नजर
आई होगी, किसी कोच की नजर पड़ी है इन पे। इस बार अच्छी डिलीवरी स्पिन होकर गई। या नजरों में तो जाहिर आप आ जाते हैं। लेकिन अभी उनको काफी मंजिलें सर करना है। उनको फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलने की जरूरत है। 97 पर 9। अगर ये मौजूदा रन बनाने की रविश रहती है तो 114 रन तक ही पहुंचेंगे, लेकिन कोशिश होनी चाहिए इस वक्त के 20 ओवर्स बैटिंग कीजिए, रन्स बन जाएंगे 125 करीब ये पहुंच जाएंगे। सलमान अली आगा उनके साथ अच्छा खेल दिया इस बार, लेट खेला, अपने बल्ले का फेस ओपन किया और बैटिंग टैलेंट की भी झलक दिखाई है। फैसल अकरम ने पेस का अच्छा इस्तेमाल किया, उन्होंने और प्लेसमेंट भी आला थी। जी मैं इसी का वेट कर रहा था, मैं देखना था कि बैटिंग में कैसे हैं। बॉलिंग में तो इन्होंने कुछ दिखाए हैं करतब, लेकिन बैटिंग भी बुरी नहीं है, अच्छा प्रॉपर शॉट है ये। सौ रन मुकम्मल किए सदर्न पंजाब की टीम ने, लेकिन इसके लिए उन्हें बहुत ज्यादा पापड़ बेलना पड़े। पावर प्ले के बाद जो अगले 5 ओवर से उनमें 4 विकेटें गिरी, टीम संभल नहीं सकी है उसके बाद से। हाँ इस बार बाउंसर की तवक्को कर रहे थे, देखिए पिछला पांव गया स्क्वायर लेग की तरफ। हाँ ये तो थोड़ा बहुत आपको इग्नोर करना पड़ेगा, जिस नंबर पर वो बैटिंग कर रहे हैं, नए हैं, हो सकता है इनके पास स्किल ज्यादा हो, लेकिन इनकी बॉलिंग का तो कोई नेमुल बदल नहीं। बड़ी अच्छी बॉलिंग की, ये देखिए कल इन्होंने आउट किया था रिजवान को और उन्होंने कंफ्यूज करके रखा है अच्छे बैट्समैन को, दोनों तरफ स्पिन करते हैं बॉल। चले आप अंडर 19 वर्ल्ड कप में ना गुंजाइश दें, PSL में कहीं ना कहीं नजर में आएंगे। जी हाँ बिल्कुल आएंगे, खास तौर पर ये जो इतनी अनमोल विकेट इन्होंने हासिल की, इनकी पहली विकेट थी T20 तर्ज में। 18 बरस अभी इनकी उम्र है और लेग स्पिनर्स के बारे में वैसे भी कहते हैं कि वक्त लगता है उनको मैच्योर होने में, लेकिन इसमें कोई शुबा नहीं, टैलेंट है, वेरिएशन भी दिखाई है इनकी, जिसे पहले चाइनामैन कहते थे या लेग ब्रेक कहना चाहिए। लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन को टर्न करते हैं और गुबली भी इनकी बेहतर है। नहीं आपकी बात सही है, और वक्त के साथ साथ जिस तरह अभी तो 18 साल इनकी उम्र है, रिस्ट और मजबूत होगी और जान पकड़ेगी, आहिस्ता आहिस्ता इनको और ज़्यादा कंट्रोल आ जाएगा अपनी बॉलिंग पे। लेकिन जहां तक बात इन पे नज़र डालने की है, किसी कोच ने देखा होगा, डेफिनेटली इसमें कोई दो राय नहीं, जो इन्होंने परफॉर्मेंस दी है, विकेट ले ना ले, लेकिन जिस तरह से कॉन्फिडेंस दिखाया है वो श्योरली किसी ना किसी को तो इम्प्रेस किया ही होगा। ये मुदस्सिर नजर गए थे मुल्तान में जब वो ट्रायल्स लेने के लिए, तो ये उनकी नजरों में आए थे सबसे पहले। और बोल्ड कर दिया, तीनों स्टंप्स इन्होंने एक्सपोज की और निशाना साध लिया इस बार अम्माद ने, और इस तरह पूरी टीम सदर्न पंजाब की टीम यहां आउट हो गई। ये उनका सबसे कम स्कोर है नेशनल T20 क्रिकेट की तारीख में। 7 रन बनाकर फैसल आउट हुए। अम्बाद ने अच्छा स्पेल किया, 3 खिलाड़ी उन्होंने आउट किए। जी हाँ, जैसे आपने कहा स्टंप्स को एक्सपोज किया और ऑन टारगेट रहे अम्बाद, बट
लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जो ATF सदर्न पंजाब को अब देखनी होंगी। इस मैच को ऐसा ट्रीट नहीं कर सकते कि 101 ही है, फाइट ज़रूर दे। और ऐसी पॉसिबिलिटीज़ है तो अगर कप्तान अपने बॉलर्स का इस्तेमाल ज़रा अच्छी तरह करे तो चैलेंज किया जा सकता है। क्योंकि ये ना भूलिएगा तारिक साहब के बैटिंग में स्ट्रगल बलूचिस्तान भी कर रहा है, लेकिन इस परफॉर्मेंस को आप उनसे ले नहीं सकते। उनके बॉलर्स, उनके फील्डर्स ने आज बड़ी उम्दा कारकर्दगी दिखाई है। टॉस जीत के फील्डिंग का फैसला किया और 101 पे पूरी टीम को समेट दिया। अहमद भट्ट ने इस टेल का सफाया किया। यासिर शाह ने मिडिल ओवर्स में आकर अपनी लेग स्पिन बॉलिंग का जादू जगाया। ये ATF सदर्न पंजाब का स्कोर कार्ड। जैन अब्बास आज बगैर को रन बनाए आउट हुए। पहली गेंद पर जीशान अशरफ और सुहेब मकसूद के दरमियान अच्छी पार्टनरशिप थी 42 रन की, लेकिन सुहेब मकसूद जैसे ही आउट हुए बिल्कुल कहानी ने एक नया मोड़ इख्तियार कर लिया। एक विकेट खुर्रम ने ली नई गेंद पर और फिर उमैद आसिफ ने 2 विकेटें हासिल की, लेकिन अम्माद और यासिर शाह ने बिल्कुल कमर तोड़ दी। काशिफ भट्टी ने भी एक शिकार किया। अब आपको लिए चलते हैं बाजीद खान की जानिब जो मैदान पर हमारे मुंतजिर। यासिर आज बहुत ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हुई, 3 आउट के। पिच में थोड़ी सपोर्ट थी, ये क्या फ्रेश विकेट था, थोड़ा सा मॉइस्चर था, थोड़ा सा ग्रिप हो रहा था बॉल और पिच सपोर्ट करता स्पिनर को थोड़ी बहुत। बिस्मिल्लाह की बात ना हो तो उन्होंने 2 कैचेस आपकी बॉल बड़े मुश्किल कैच पकड़े। वो अच्छा कीपर है, वो अभी KPL में भी खेला और इज गुड विकेट कीपर और उसने अच्छे कैप्ट किया है। अगर ओवरऑल देखा जाए तो हमारे पूरे टूर्नामेंट में हमारी फील्डिंग सबसे अच्छी जा रही है। आज का मैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, पिछले 2 मैचेस आप हार चुके, तो कितनी बड़ी मतलब आपको ओनस लेना पड़ा? ये कि देख लो पिछले 2 मैच हम हार चुके, लेकिन हमारी टीम दिन ब दिन अच्छा खेल रही, क्योंकि पहले मैच में जिस तरह थी उसके बाद नेक्स्ट मैच में उससे अच्छा करके दिखाया। तो अनफॉर्चुनेटली हम तो हार गए थे 2 मैचेस। इस पर कोशिश करेंगे इंशाल्लाह ये रन चेस करें। बैटिंग में कब प्रमोशन मिल रही है आपको? तो बैटिंग में हमारे प्लेयर्स ये नीचे वाली प्लेयर्स हारे रन कर रहे हैं और कोशिश करेंगे जब भी चांस मिलेगा अच्छा करके दिखाएं। टॉप ऑर्डर में खेले ना फिर इंशाल्लाह। चले, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तो बलूचिस्तान को 102 रन दरकार हैं 20 ओवर्स में कामयाबी के लिए, सिर्फ 5.1 की औसत से।
Welcome back. We're at the half-time of this important game. Now, both these teams need points. They need 2 points, of course, because they're both at the bottom of the table. I'm afraid that total is not going to help them. 101, they didn't even bat 18 overs. Really disappointing. 18 to Ashraf. Maqsood got 24. Have the top scorers right at the top. It didn't start very well for them, unfortunately, because wickets fell pretty much straight away. LBW shout right at the beginning. Zain Abbas was sent on his way for 1. Nicely worked on the onside, couple of hefty blows. And just trying a couple of big hits, trying to get after the ball as much as possible, trying to get a good start. That's obviously what they're looking to get going, but unfortunately it didn't last very long. This was Sohaib, who was one of the key pins, of course. The captain sliced that away, and he was caught at backward point. And then suddenly went south after that. Ashraf, Yasir Shah injured his thumb. He was brought into the attack, and he was soon dismissed. Soon after that, Kushto arrived at the crease and got one he put away. And then he proceeded to hit one straight up in the air, and he was also on his way. So this is 4 balls into the 8th over, and they're in a lot of trouble at this stage. Azam Khan, a little bit of a tickle behind, and Yasir Shah was right into this game and thoroughly enjoying himself. And another one as well, the spinner, having a great time. A tickle around the corner. These extra boundaries certainly helped their cause a bit, but that was a brilliant catch. Very, very good catch. A little bit of movement through the air, outside edge, and a fine grab from Basmilla. And that was another soft dismissal. Far too many soft dismissals, I'm afraid. Really was a very disappointing performance overall. There was one soon before that was a teaser in the covers, and that was caught that time around. But this was really a poor performance, getting just past the 100 mark. 101 it is, all out. So then Punjab will be really disappointed with that. Balochistan, on the other hand, will be delighted. Look at those numbers. Ahmed not quite 4 overs, picked up 3 for 11. Yasir Shah with that damaged thumb, 3 for 19. And Karan picked up 1 for 19, and Kashyap also picked up 1 for 18, and a couple to Ahmed, who also seems to chip in and do a very good job. He just bowled the 1 over, picked up a wicket, was rested, came back later, picked up another wicket. So it was good work from him, dovetailing at the top and also at the end. So 101 all out, and Yasir Shah 3 for 19 was the pick of the bowlers. ATF Southern Punjab need to pull something out of the bag. First half wasn't great, well, to say the least. That's an understatement. Already lost a couple of games, and it looks as if they don't, as a bowling unit, don't perform exceptionally well today, they're staring at defeat number 3. A long lecture from the captain, just reiterating what he wants and how they need to fight, but it's going to be tough. Gee, they're going to have to lift. I mean, that dugout, that change room would have been quite low after that performance. So you're right, if they go down again today and 3 out of 3 losses, that is really going to make it tough from there. Ground staff done a very good job so far. Conditions are really good. I mean, I counted 6 soft dismissals with that performance, and that's just not good enough at this level. Some might say there might have been maybe 1 more, but I counted 6 soft ones. Baz, I don't know how many you counted. I can't really count that far, but you're saying 6, I'm saying maybe 7. But the problem is that once you bat first, Imam ul Haq walking out to bat, strike rate not too great, but doesn't need that. He just needs to bat through this innings. His partner, Abdul Wahid, well, early days for him. He does strike the ball hard, but they need to just
but normally give themselves ample opportunity to get in on this wicket. Naseem Shah will provide you with pace, and maybe he needs to build up a head of steam to get a couple of wickets straight away. And he's been doing a pretty good job. He's one of the positives, and there haven't been many. He's been going at just 6.8 runs per over so far in this edition of the National T20. But you're right, Imamul Haq, it's pretty much tailor-made for him. Just to make sure that he pushes it around, nudges it around. They've just got 3 figures to get, just over the 100 mark. Zia-ul Haq has got a best of 5 for 23, economy rate overall of just under 7.5. That's tidy. So they'll be looking, they'll be hunting with the new ball, hunting for wickets early. That's what you've got to do as an outfit right at the top. Back yourself to pick up wickets. Try and get a little bit of swing around the place. Left armour, if you can swing the ball a bit, get it in the right areas, you're a chance. And that's why Saab has decided to put in a couple of slips. Here we go. Yeah, Mikey, with these pitches which slightly on the slower side, it's quite difficult when you bat first to actually set yourself a target or think that this will win you the game. And now, as we know, there's so much data flying around. There's so much information on every player, every game, and how you go about certain phases of the game. And the coaches, the coach's job is so hard now because of the fact that you've got such a lot of information, but you've got to filter that information to your players, but also then keep it simple. Yeah, but in saying that, I'm an advocate of the fact that I think in T20 cricket you can overcomplicate things. I really do. I think people overthink it often. I think all these matchups to matchups and that sort of stuff. Yes, if someone's got a specific problem with someone or a particular style and doesn't get runs or gets dismissed by a particular bowler and doesn't like face him, fair enough. But gee, don't get crazy about it. Don't overthink it. I mean, really, you've got a situation here where you just got to get the ball in the right areas. You've got to try and stop the batsman scoring some runs and pick up wickets at the same time and take your catches and not bowl any wides. That also helps. And with that, in these sort of games, players get sucked in trying to hit those big hits and get yourself up to 160 and end up getting bowled out for under 100. So there must be a cut-off point where you say, no, okay, now we just bat normally and get through the innings, and maybe now just get to 120, stay in the game. What, like 3 in the middle order could have done today? Just off the top of my head. You said 6, so middle order and top order then. Just talking the much vaunted middle order. Yeah, runs at the top help. This is like Imamul Haq knows, and it's a real opportunity for him to just set a bit of a tone. Now, he hasn't scored any runs basically so far. What's he got, 14, I think? 14 runs so far in the tournament, so he hasn't got going at all. He needs to get runs. He needs to, again, set a tone. And I've used that phrase so many times today because you've got two sides at the bottom. He's a senior pro. He's a senior player. He's captain. Yasir Shah stood up with the ball, senior pro with the ball. And now it's up to Imamul Haq just to guide his team through. And for Balochistan, they needed this. They also have lost 2 in 2. They needed a big performance, and that came by Yasir Shah, and that came by their fielding and their keeping as well. It was a terrific fielding display by Balochistan. They just need to back it up and make it a comfortable victory. Make sure that there's no problems in chasing the target. Make it comfortable so that they take that into account when they play the next game, which is against Sindh. So they get up today, which they should do. They just get in close to carrying. Say that's the slip. They get up today, then they come up against Sindh, who have been playing pretty well, but not extraordinarily. Played a couple and have won 2 though, Sindh. So they're sitting pretty.
haven't set the world afire, and I think that KP, the one team that's head and shoulders above the rest at the moment. No run, no run. That's the end of the first over. 3 for Brandy. The experienced players, Harris Hales in the lineup today, 90 matches for him, not far shy of 2,000 runs, strike rates on the low side. Bismillah Khan's another one who needs to get some runs. He's experienced but hasn't got going in this tournament. In fact, their top 4 have barely got 100 runs so far in the tournament. For Balochistan, Naseem Shah. He's going to be the challenge. A little bit of movement in towards the left-hander. He's the one they're going to have to watch. And when you're only chasing 101, you can absorb his deliveries. That's quick. Scrolling off, what, 15 yards maybe? Yeah, celebration, Yorker. Oh, easy as you like. You do it that way. In his last 5 T20s, Naseem Shah is, including the semi-final and the final of the CPL, taken 8 wickets, an average of just over 16. So that's good going, good rhythm. No run, no run. Nice rhythm, good pace, and a lot of indecision. Shy at the stumps at the last minute. I think he would have been safely home, but certainly confusion in the middle. Oh, actually, Imam just started off for the run and then said no. Mangas, I didn't know where the ball had gone, so that's where the confusion lied. He just thought Imam was coming. Top over so far, just 1 from it, 2 balls to go. That's nicely played, really nicely played, good control. Not a great deal of pace in the surface, so plenty of time to pick up the short one.
Yeah, super bull shot. In control all the way, let the ball come onto the bat, watched it onto the bat and rolled his wrist as well. Just timed it. Controlled shot to the fence. I mean, that's just a little snapshot there. I don't know why Naseem Shah would try that. His first 4 deliveries have been really good. So why try a short delivery on a track which has got no pace? It's just going to sit up and be put away. Yeah, 143 k's per hour. So, gee, had plenty of time to swivel. It's a better line and length. Make them work hard for their runs. Single off the last ball, so 6 from it, 9 for no loss. Looking wickets, looking at Naseem Shah, Ziaul Haq to provide those wickets, and then there's Lakram now to have a day where he picks up 3 or 4. The spinners need to come to the party as well, but right now they played Ziaul Haq for this very game with the new ball to get wickets. Ziaul Haq, very experienced left-arm bowler, just played Pakistan under 19 as well. He's played, well, now about 10 years of first-class cricket, so knows what to do with the new ball. And ATF South Punjab who want him to fire, want him to get some swing. He's bowled that length, that probing length, but as you said, there's not a lot out of the surface. But there's a lot to get from the PCB merchandise shop. Create an account at shop.pcb.com.pk, merchandise store now, and get a chance to win a Pakistan cricket team T20 World Cup shirt signed by all the Pakistan T20 World Cup squad. Offer ends on 15th October. Terms and conditions apply. As they normally do, Baz. Short ball that time, just a little bit of glove involved. Good bowling down, good bowling. I was having a conversation on air yesterday with Sana, we were talking about, and I can't remember who was batting at the time, but someone was scooting between the wickets and touching and turning and running well. And we were talking about those who ran between the wickets really well. And I said Jonty Rhodes was the best that I'd seen. And I thought I'd just do a little bit of research. You know that they say the elite runners in T20 cricket these days. That's nicely played. That's a very good shot indeed.
Beautifully finished at the over. I have to come back to that. That's a fine stroke. End of that over. There was one from it before that last ball, so in the end it's now 5, so 14 for no loss. So check to make sure it did go inside. There's going to have to be a little change. That's 6 runs. So suddenly 7 runs from the over. 16 for no loss. Simchar again. Short ball just stood up to be smashed leg side. It went way in front of square as well. So now he's onto it quickly, and there's enough time to swivel away and hit it over the fence. Thought about a quick single. Now, the elite runners in T20 cricket around the world, those playing in the other leagues, they say the elite runners, when they run and touch and turn and go back for the second run, to run 2 runs takes them 6 seconds. That's what the elite guys do. That's pretty quick, right? 6 seconds. 6 seconds. Is that even quick? So who would be in those elite? There's a host apparently who can do it. A whole host. Joss Butler is the one who is the quickest. He has been timed to run between the wickets at 33 k's per hour. Running between the wickets. That's ridiculous. That's a blur. That's ridiculous. 33. Just for men, scan the QR code to win exciting prizes. I want a QR code which gets me to 33 seconds between the wickets. Oh, there's a neck. There's the first wicket. Imam Haq is gone. Naseem Shah is continuing his fine form, 143 k's per hour, and he's picked up the skipper. Yeah, it's the pace that he bowls at that makes the batsman just flirt at this. It's outside off stump, it's hit the seam, but it's actually the pace that has made Imam follow the delivery outside off. Good delivery, soft shot, gone for 8, 17 for 1. Balochistan have lost their skipper, lost their first wicket, 17 for 1 now. Bismillah Khan, plenty of experience, 60 games, just strike the ball pretty well. And he kept superbly today. Great catch, yeah. Easing down to third man on the bounce.
seam position was perfect, just angled away. Imam doesn't want to look at that replay again. Because it's more or less a nothing shot, just poked at it, the outside edge. Better off having a big go at it, not just flirting at it. So ATF, Southern Punjab, have got an opportunity here. Pick up another quick one. See if they can somehow get another wicket just to try and get a bit of panic going into that dugout. End of that over. Successful one. Couple of runs only and an important wicket. 18 for 1. बिस्मिल्लाह खान और पंगल ज़ई को पिछले दोनों मैचों में भी एक साथ बैटिंग करने का मौका मिला था, क्योंकि इमामुल हक ही दोनों मौके पर गिरने वाली और आज तीसरी बार भी पहली विकेट थे बलूचिस्तान की। बेहतर होता बिस्मिल्लाह खान से ओपनिंग कराई जाती, क्योंकि T20 में खुद को कई बार मनवा चुके हैं पहले 6 ओवर्स में। हाँ, इस बार गेंद हवा में रही, लेकिन गली की फील्डर के हाथ नहीं लगी। काफी तेज बॉलर हैं ज़ियाउल हक इस पिच में, क्योंकि बाउंस है और कई बार ऑकवर्ड लेंथ से भी ये गेंद को उछालने की अहलियत रखते हैं। और पिछले सीजन में इन्होंने सबसे तबाहकुन स्पेल किया था नेशनल स्टेडियम कराची में, जब एक सेशन में बलूचिस्तान की टीम को ऑल आउट किया। और यूं कहना चाहिए कि बाउंस आउट किया था। बिलाशुबा 2020 की कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में सबसे तेज और खतरनाक स्पेल था। पहला मैच खेल रहे हैं आज ज़िया। मेरे साथ कमेंट्री बॉक्स में मरीना इकबाल। आज इनकी शमूलियत हुई प्लेइंग 11 में और लंबे कद के मालिक हैं। अच्छा बाउंस भी मिलता है, सीम पोजीशन भी इनकी अच्छी है। मुश्किलात बना सकते हैं ये बलूचिस्तान के लिए। कट शॉट, इस बार जोरदार पॉइंट पर फील्डर थे हसन खान, जो कि बहुत फुर्तीले हैं, लेकिन उन्हें अपनी जगह से हिलने का भी मौका नहीं मिला। कटर किया था, फिफ्थ मिल गई थी और बिस्मिल्लाह खान ने कोई मौका नहीं छोड़ा। इस बार कोई मुश्किल उनको नहीं हुई गैप तलाश करने में, और बैट से निकलते ही 4 रन तय थे। स्लिप में फील्डर को अभी भी खड़ा किया गया है। अच्छी डिलीवरी, विकेट कीपर स्लिप, दोनों ने हाथ उठाए। इस बार गेंद तवक्कुओ से ज्यादा उठकर आई पंगल ज़ई के लिए। थोड़ा सा आगे पिच किया था पिछली गेंद की निस्बत, और वहीं से बॉल जो है वो राइज किया। कदमों का कोई खास इस्तेमाल नहीं किया पंगल ज़ई ने, और इस वजह से बीट हुए। अच्छा कमबैक ज़ियाउल हक का। पंगल ज़ई का ये दूसरा इस सीजन है। हमने देखा है कि गेंद की लाइन में अच्छा आते हैं, इनिंग्स का आगाज भी करते हैं, 15-20 रन बनाते हैं, लेकिन फिर आउट हो जाते हैं। और ऐसा होता है उन टीमों में जब आपके इर्द गिर्द वो बैट्समैन ना हों जिनसे आप सीख सकें, क्योंकि बैटिंग पार्टनरशिप्स में ही जो नए बैट्समैन हैं उन्हें बैटिंग का, लंबी इनिंग्स खेलने का हुनर आता है। तो कई जो एसोसिएट टीम्स हैं उनके साथ भी ये मसला होता है कि उनके जो टैलेंटेड प्लेयर्स हैं वो बड़ी इनिंग्स नहीं खेल पाते इसी वजह से। बॉल किया, गेंद खाली जगह पर जा रही है। यहाँ पर 2 रन बहुत आसानी से बन सकते हैं, तीसरा भी बन सकता था,
दोनों बैट्समैनों ने तेज दौड़ नहीं लगाई। 5 के बाद 25 पर 1। ये क्रिकेट नशरिया अब तक एशिया, शुमाली अमेरिका और यूरोप के बड़े आज़मों में पहुंच रहा है रावलपिंडी से। अच्छा स्ट्रोक। बिस्मिल्लाह खान बैकफुट पर स्ट्रोक खेलने के लिए जाने जाते हैं, लेकिन नसीम शाह का फॉर्म में आना और बॉलिंग रिदम में आना ये पाकिस्तान के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि वर्ल्ड T20 के बाद टीम को बांग्लादेश के दौरे पर भी जाना है। वहाँ एक तेज़ बॉलर की ज़रूरत होगी। शाहीन अफरीदी के साथ मोहम्मद अब्बास वेस्ट इंडीज़ में थे, लेकिन ज़्यादा तेज़ बॉलिंग नहीं कर रहे थे। इस बार रफ्तार कम की। नसीम शाह बहुत समझदारी से बॉल कर रहे हैं। एक बार फिर स्लोअर बॉल्स हमें देखने को मिल रही हैं पेसर्स की जानिब से। बीट किया, बिल्कुल भी नहीं रीड कर पाए थे, फिंगर्स क्रॉस की थी। बिल्कुल अब मुकाबला सख्त होगा नसीम शाह के लिए, क्योंकि धानी भी एक सॉलिड कंटेंडर है। उसके बाद हारिस रऊफ है, शाहीन शाह तो कर ही रहे हैं परफॉर्म। और एशिया की पिचेस पर इनका किरदार अहम हो सकता है। टेस्ट मैचेस में नसीम शाह जितनी रफ्तार से बॉलिंग करते हैं। आखिरी बार जब बांग्लादेश के खिलाफ इसी पिच पर इनने बॉलिंग की थी तो हैट्रिक की थी। दुनिया के कम उम्र बॉलर बने थे टेस्ट मैचों में हैट्रिक करने वाले नसीम शाह। गेंद को रिवर्स करने की भी अहलियत रखते हैं। नई गेंद ये कुकाबुरा की है, इसका अच्छा इस्तेमाल कर रहे हैं। स्क्वायर लेग के फील्डर को जरा सफाइन किया, जो कि डीप है। छियासी गेंदों पे इनको 76 रन दरकार हैं। कुछ खास मुश्किल हदफ नहीं है। टॉस पे बात कर रहे थे इमाम उल हक के, टॉप 3 बैटर्स को जिम्मेदारी लेनी होगी। खुद वो इस चीज़ को नहीं निभा पाए, लेकिन बिस्मिल्लाह खान और बंगल जई जिस तरह की फॉर्म में है और कुछ खास मुश्किलात पिच पे देखने को भी नहीं मिली स्ट्रोक्स लगाते हुए, तो ये पार्टनरशिप बहुत अहम होगी इनके लिए। फिर लेग कटर किया, रन हासिल किया। गेंद को खेलते ही दौड़ पड़े थे। नसीम शाह अब से चंद बरस पहले ये केपी से लाहौर आए थे और LCC ग्राउंड पर अब्दुल कादिर अकेडमी से अपनी बॉलिंग का सफ़र शुरू किया। हार्ड बॉल से क्रिकेट वहीं पर खेलना शुरू की। इब्तदाई दिनों में ही अजीम अब्दुल कादिर ने इनके टैलेंट का अंदाज़ा लगा लिया था। एक और तेज बाउंसर, ये सीधी जाकर हेलमेट की ग्रिल पर लगी। खैरियत दरियाफ्त करने के लिए गए हैं बिस्मिल्लाह की नसीम। अब तो ये प्रोटोकॉल्स पूरे किए जाएंगे। 27 पर 1।
इस मौके पर अगर दोनों टीमों का मवाजना करें, यानी पावर प्ले के बाद, तो एटीएफ सदर्न पंजाब ने 50 रन बनाए थे 2 विकेटों के नुकसान पर। बलूचिस्तान के रन्स कम हैं लेकिन विकेट एक गिरी हुई है। तो दूसरा फायदा ये है कि इनके सामने हदफ ज्यादा बड़ा नहीं है। ये देखिए गेंद तवक्कुस बहुत ज्यादा तेज आई, सीधी गई, हेलमेट को जंगला इस पे। बहुत अच्छी लेंथ मिक्स कर रहे थे और पेस भी। इस बार बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि बिस्मिल्लाह लीव कर पाते। बहुत लेट हो गए थे जब तक जज कर पाए कि कितना बाउंस है। यार जब ये गेंद फास्ट बॉलर की हेलमेट से लग के बैट्समैन के सामने आती है खिलाड़ी के, तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी फोर्स से लगी होगी। लेकिन अच्छी खबर यह है कि पूरे होशो हवास में हैं और अंपायर्स गफ्फार काज़मी इशारा कर रहे हैं कि नॉन पावर प्ले का जो मरहला है उसे शुरू किया जाए। इस टूर्नामेंट में फास्ट बॉलिंग अच्छी देखने को मिल रही है। हारिस, रऊफूम, शाहनवाज धानी ने कल बड़ी तेज बॉलिंग की, उनने भी बाउंसर्स पर कामयाबियां हासिल की। और अब वक्त हो चला है लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिन बॉलिंग का। फैसल अकरम जादू जगाने के लिए आए हैं। ये अपनी कलाई से 2 मैचेस में विकेट तो एक ही हासिल की है लेकिन तवज्जो बहुत ज्यादा हासिल की है। काफी कम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर्स हमें देखने को मिलते हैं इस सर्किट में, इसलिए थोड़ा सा वक्त लगता है बैटर्स को इनका एक्शन और स्पिन को एडजस्ट करने में। पिक करना आसान नहीं होता। अब ये आजमाइश का मरहला है बिस्मिल्लाह और बंगलजई के लिए। स्लिप है, आजम खान विकेट के पीछे हैं, शॉर्ट मिड विकेट पर जैन अब्बास। सवाल तो ये पूछेंगे और देखना यही होगा कि बंगलजई बिस्मिल्लाह खान के हाथ से रीड कर सकेंगे इनको, क्योंकि पाकिस्तान में ये नापैद है इस तरह की स्पिन बॉलिंग। टर्न देखने को मिली लेकिन स्लो टर्न थी, एडजस्ट कर गए। और शाम ढल रही है यहाँ पिंडी स्टेडियम में, और उसके साथ चाय ना हो तो फिर शाम मुकम्मल नहीं होती। टपाल टी मोमेंट, शायकीन लुत्फानंदोज हो रहे हैं इससे। ऑफ साइड में एक फील्डर का इजाफा किया है। बिस्मिल्लाह खान जो सामने आए, गुगली ये वाला थोड़ा आगे से, सही है। पाकिस्तान की फर्स्ट क्लास क्रिकेट में 60 और 70 की दहाई में एक चाइनामैन गुगली बॉलर आए थे जो बाएं हाथ से बॉलिंग करते थे और उनका नाम था खालिद खोखर। खालिद खोखर के जो वालिद थे वो पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेले थे। असलम खोखर रेलवेज के लिए खेला करते थे। खालिद खोखर फैसल उसके बाद फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल सकते हैं। और इस बार कट कर दिया। 2 फील्डर्स वहां पर मौजूद थे लेकिन बड़ी आला प्लेसमेंट बिस्मिल्लाह खान की। बिस्मिल्लाह खान अपना कमाल दिखाते हुए, कट वाली विड्थ नहीं थी लेकिन थोड़ा सा रूम दिया और फिर कलाइयों का इस्तेमाल किया और फील्डर के पास कोई मौका नहीं था। शानदार शॉट 4 रन्स के लिए। पहले ओवर में 8 रन दिए फैसल ने, 35 पर 1 बलूचिस्तान। सदर्न पंजाब की टीम बमुश्किल आज सेंचुरी बना सकी। सोहेब मकसूद ने 24 रन बनाए,
हसन, जीशान 19 और 18 बना सके। बॉलिंग बड़ी उम्दा थी बलूचिस्तान की। पहले दोनों मैचेस में भी उनके बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की थी। दरअसल ओनस जो है ये इनकी बैटिंग पर है। सरनिगू इनकी बैटिंग ही करती रही दोनों मौके पर टीम को, और आज मौका है उसका इजाला करने का। दूसरा रन यहाँ पर लेना चाहते थे और फील्डर को दबाव में लिया और अब ले गए। जीशान अशरफ थे बाउंड्री लाइन पर, विकेट कीपर हैं और इस वक्त आउट फील्डर के फराइज अंजाम दे रहे हैं। फील्डिंग मसला रहा है सदर्न पंजाब के लिए, और यहाँ पे दूसरा रन कहीं मौजूद नहीं था लेकिन स्लिप हुए और मौके का फायदा उठाया बिस्मिल्लाह और सदर्न पंजाब और बलूचिस्तान के दरमियान 4 मैचेस हुए हैं। इससे पहले नेशनल T20 कप में जो चारों खेले हुए हैं बिस्मिल्लाह खान ने, और उनमें से 3 मौके पर बलूचिस्तान की टीम कामयाब रही। हवा में खेला और मिड ऑन को क्लियर किया। अच्छा स्ट्रोक बंगलजई का। कल साहबजादा फरहान ने ऐसा ही अंदाज लेफ्ट आर्म स्पिनर के खिलाफ उन्होंने इख्तियार किया था और कामयाबी मिली थी सदर्न पंजाब के अगेंस्ट। एंगल मिल गया था बंगलजई को, खास टर्न भी नहीं हो रहा और मिड ऑन भी मौजूद था। शानदार शॉट। यही देखना है कि अब इन्होंने 22 रन बना लिए हैं, पूरे एतमाद लग रहे हैं कि यहाँ से आगे क्या ये बड़ी इनिंग्स खेल सकते हैं। अगर ये नॉट आउट जाते हैं आज 50 रन बनाकर, तो इनकी टीम के लिए और खुद इनके लिए ये बहुत ही अच्छी खबर हो जाएगी। 8वां ओवर मुकम्मल होने पर 42 पर 1। Bangladesh and Bismillah bringing calm to this run chase. Fire rate just touching 5, 4.99. And being able to pick up the odd boundary and also rotate strike against spin especially. So Kings under complete control at the moment for Balochistan. Yeah, it's like an exciting test match. So when the side batting first doesn't get a big score, then of course the match can't be too exciting. And we know both these teams, well, coming into this game, have lost 2 out of 2. So they don't have the confidence to soar. So even if this run chase, if this was a team who's winning for fun, you'd see a lot more expression by the batsman and maybe trying to chase a target down as quickly as possible. Right now, they just, one thing in their mind is to get over the line. 46 for 1.
game just meandering along and just looking at Shoaib Maqsood having a word with Hassan Khan. But there's no apparent change in the field. And you just feel that if this carries on for another, well, 20-25 runs, the game is over and done with. Good shot. It's going to the boundary, but there's a fielder there. So just a single. And if I was the captain here, I would, have a real aggressive field placing, because, ooh, that could have hurt him. Probably has. The umpire Imran Javed did well to avoid that throw. They're saying that it came straight from the line of the sun and couldn't. Well, he was looking away and suddenly he reacted. Hassan Khan, well, not as quick. So if I were Shoaib Maqsood and I'd just score over 100, I would have slips and close-in fielders and, fielders or field, within the circle, and take my chances to get wickets, because that's the only way. And then Balochistan hasn't done well also. So Tapal tea, people are enjoying it, the match and the tea. Yes, you talk about aggressive field set, but let alone having slips in place, you could also squeeze the batsman by having more people in the circle, make him hit over the top. Just give them the opportunity to take the risk, and in that maybe you can get a wicket or so. But if this meanders along for another 5-6 overs, then basically the match is done. Yes, you can apply pressure by creating those dots, but at the moment they're not creating enough dots, and so something has to change, and maybe some more fielders in the circle just to apply a bit of pressure in terms of then making the batsman do something different, or, well, if he hits over the top, fair enough. Absolutely, something has to be done, some kind of risk, some kind of change in the field placing, few close-in fielders or more inside the circle. Otherwise, it's a damn squib end of the day for everyone watching and the players. Well, he's hit it in the air anyway, and it's gone too long on and dropped. Well, the opportunity was there. And Zain Abbas has camped underneath that, and he's misjudged it completely because it was over his head. He's come in maybe a bit too far. He's got a lot of time to think about it, and then at the last moment he knows he backpedals, never in control. So the bad day continues for the southern Punjab side. The catch has been dropped, and is that a wicket? Is that a run out? Let's see. Look pretty close. Well, has Zain Abbas redeemed himself? A direct throw from the deep. Straight away it was a call for 2. Zain Abbas hits the target, but he's home. It's a good call in the end and good running. Even with the direct throw, didn't matter. Not out. And 10 overs done, 53 for 1.
opportunity with Bismillah hitting this in the air was there. It was Balochistan who fielded brilliantly. Inside edge, and this will probably race away to the fence. So it's been that kind of day for ATF's Southern Punjab. Yeah, even the miscues are going for fours. When the rub of the green is not in your half, then obviously these things happen, and they didn't bat well at all. I mean, no one was able to take pressure, and that was pretty sad for me because some of them are international players. So far, just one game with the team batting first has won, so setting a target has been an issue. Batting first. And nobody's really been able to nail that. That's nailed because it's just a little sweep around the corner to the fence. Baza, this time it was a real issue setting the target, because normally if you get 140, 150, I mean, still you have an opportunity. But this match, I mean, this game, just 100 hardly. Nice sweep shot. Going for a 4. So if you don't get any runs, just, you know, can't bat, don't take pressure, just give a target of 100, and any team is going to win then, you know. Just cruise. Ball for 2, and they do that well. So after 11, it's 64 for 1. Run rate of 4.3 per over. Arslan Khan into his 3rd over. Created an opportunity last time around. It just seems as if this match is slipping away. But it was good for Balochistan. Yasir Shah stood up while bowling senior pro did. They needed a victory. They weren't very good in the first 2 games, but the bowling performance, I thought they fielded exceptionally well. Bismillah has had a brilliant game. These 3 catches were top-notch, standing up to the stumps and then one diving away on his right. So big performances came in, and that means that they now are sort of pretty close to their first victory. And that's exactly what you need. You need, when the chips are down, you need your big senior pros to stand up. Yasir Shah with the ball, but that top edge, that's not simple. This is even more difficult, the inside edge. And then to top it all off, that is superb. That is fantastic. Keeping was on song, and now he's doing it with the bat. But overall in the field, as a fielding unit, they were exceptionally good today. They took all their chances. I don't remember a misfield. So it meant that they were on song straight away. The intensity was up, and it's showing in their performance. .68 for 1.
अच्छी पार्टनरशिप, छोटा स्कोर चेज करते हुए ये तो आधा स्कोर ही हो गया जो आपने हासिल करना है। रन बॉल है ऑलमोस्ट। यहाँ कितनी भी कोशिश कर लें ऐसे 101 के स्कोर को बचाना बड़ा मुश्किल है। फिर अभी जैन अब्बास ने कैच भी ड्रॉप किया, तो वो आप ज्यादा अपने ऊपर फेवर्स नहीं कर रहे हैं एज अ फील्डिंग यूनिट। ये बैटिंग भी दोनों ने जिम्मेदारी से की है। बैकफुट पर खासतौर पर कंफर्टेबल लगे हैं। कोयटा में जो बुगटी स्टेडियम की पिच है उसमें खासा बाउंस है। शायद वो पाकिस्तान की इस वक्त सबसे अच्छी क्रिकेट पिच है। इस साल वहां जाने का इत्तेफाक हुआ था। ये एक मौका था, यहाँ पर ओवर थ्रो हो सकती थी, लेकिन क्यों गिर गए थे बैट्समैन, इससे वापस नहीं मुड़ सके। तो वो एक बाउंस भी है वहां की पिचेस का, जिसके सबब ये बैट्समैन बैकफुट पर कंफर्टेबल रहते हैं। तारिक साहब वहां चलें, फिर कुछ बातचीत करता हूं मैं। रन्स मिलेंगे और ज्यादा यहाँ पर। कुछ फील्ड पोजीशंस का भी अगर जायजा लें, हम देख रहे हैं इससे पहले जब गेंद कर रहे थे अभी पिछले ओवर में फैसल अकरम, तो फाइन लेग नहीं लिया हुआ था सोहेब मकसूद ने। जो पहला फील्डर आपके है वो इन फ्रंट ऑफ द स्क्वायर था, ऑलमोस्ट स्क्वायर लेग पे, वहां 2 बाउंड्रीज हासिल हुई। T20 में बाद में बैटिंग करने वाली टीमों को हमेशा एक एज मिलता है। सामने जो स्कोर बोर्ड है उसको देखकर अपनी हिकमत अमली अपनाते हैं। खेला इसे हवा में, फील्डर पहुंच रहे हैं गेंद के नीचे और ले गया कैच। विकेट हासिल की खुशदिल शाह ने। बिस्मिल्लाह खान जो छक्का लगाना चाहते थे इस बार कंट्रोल नहीं कर सके अपने स्ट्रोक को। 57 रन की इस पार्टनरशिप का भी खात्मा हो गया। अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए, बाउंड्री लाइन पर आमिर यामीन ने इस गेंद को जा लिया हाथों हाथ। तो बिस्मिल्लाह खान 28 रन बनाने के बाद चले हैं वापस पवेलियन 74 पर 2। अहमद भट्ट को मैदान में उतारा गया है इस वक्त बैटिंग करने के लिए कि वो बंगल जई का साथ दें। 58 मैचेस में 365 रन हैं। स्ट्राइक रेट इनका बहुत बढ़ा है पिछले 1-2 बरस में। ये सदर्न पंजाब के खिलाफ वैसे भी अच्छा खेलने के लिए जाने जाते हैं अहमद भट्ट। फैसलाबाद में इन्होंने सेमीफाइनल जितवा दिया था। तो इनके आने का सबब बिस्मिल्लाह खान का ये स्ट्रोक था। ये छक्का लगाना चाहते थे लॉन्ग ऑन के ऊपर से, अंदाजा हो गया था उसी वक्त। मंगल जई जो हैं खासे पुरसुकून रहकर बैटिंग कर रहे हैं आज। जो है हालांकि स्कोर भी कम है लेकिन पिच से खासा शनासा लगते हैं। पिच की पेस से गेंद के स्पिन होने का इंतजार करते हैं, उसके बाद अपने शॉट्स खेलते हैं और ज़्यादातर ऑफ साइड में ही खेलते हुए नजर आए। अभी तक की जो परफॉर्मेंस हमने देखी है बलूचिस्तान और सदर्न पंजाब की, ये 2 टीमें खास इसलिए क्योंकि ये बिल्कुल नीचे हैं पॉइंट्स टेबल में इस वक्त। उसमें थोड़ी सी
कोई सेंस ऑफ अर्जेंसी सी नजर आई है बैटिंग करते हुए दोनों टीमों की। यही सवाल मैंने कल शादाब से भी पूछा था, जहां पे एक के बाद एक बैट्समैन जो है वो आके बड़ी हिट्स लगाने की कोशिश कर रहा है, और उस असना में यही हो रहा था कि आप बड़ा टोटल तो नहीं कर पा रहे थे, या उसकी अगर आपने सोच के रखी हुई थी कि बड़ा टोटल करना, वो हो नहीं पा रहा। तो ये जो अर्जेंसी सी नजर आ रही है बैट्समैन जो आ रहे हैं, एक के बाद एक विकेट्स गिर रही हैं, आपकी असेसमेंट क्या है? किस माइंडसेट से आ रहे हैं? क्या इनको गेम प्लान दिया गया? यहाँ सॉफ्ट डिसमिसल्स तो हम देखते आए हैं, बैटिंग का वो म्यार अभी तक नजर आया नहीं है। ये देखिए एक बार फिर जो है अक्रॉस द लाइन खेलने के लिए गए, गेंद को रीड किए बगैर, ये गुगली थी। आजम खान ने बेल जरूर उड़ाई, लेकिन पिछला पांव क्रीज के अंदर ही था। 75 पे 2। ये जब से 6 टीमें हुई हैं पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में, सबसे बुरा रिकॉर्ड ATF सदर्न पंजाब का है नेशनल T20 कप में। सिर्फ 7 ही मैचेस जिन्होंने जीते। तो इनको अपना म्यार बेहतर करना होगा। पिछले साल जब शान मसूद कप्तान थे तो बेहतरी के आसार लग रहे थे। बैक साइड में फील्डर हैं 2, जैन अब्बास पहले जा पहुंचे। मजेदार बात यह है तारिक साहब, आपने ग्राफिक अभी दिखाया सदर्न पंजाब को मेंशन किया, वो पिछले 2 एडिशन से ही शुरू हुआ है ये 6 टीमों का सिलसिला। पहले में सेमीफाइनल खेले, दूसरे में फाइनल खेले हैं सदर्न पंजाब। यहाँ लेकिन मैचेस सबसे कम उनने जीते हुए हैं, और अभी इस टूर्नामेंट में तो वो एक मैच भी नहीं जीत सके। आमतौर पर जो है वो देर से जागते हैं ये, लेकिन जो नुक्ता मैं उठाना चाहता हूँ वो ये है कि पिछले बरस जब शान मसूद इनके कप्तान थे, टीम सेटल होती हुई नज़र आ रही थी। शायद बेहतर होता कि शान मसूद के साथ ही कंटिन्यू किया जाता। बॉलर के सर के ऊपर से खेला, इस बार खूबसूरती से 1 रन हासिल कर लिया गया। ये देर से जागते हैं कि जो बात आपने कही उससे मुझे आप याद आ गए। होता है कैसे? देर से जागना कोई बुरी बात नहीं है। अगर ये टूर्नामेंट में देर से जागे थे पिछले साल भी और फाइनल खेल गए। यहाँ फिर गैप में खेला है खूबसूरती के साथ, 1 रन और दूसरा भी हासिल करेंगे। जीशान ने गेंद को दूसरी फुर्सत में जाकर रोका। ये देखिए नॉर्दर्न ने 20 में से 15 मैचेस जीते हैं, खैबर पख्तूनख्वा ने 11 मैचेस जीते हैं। देखिए मेरा मकसद वही है, 20 में से 7 मैच जीते हैं, लेकिन फिर भी सेमीफाइनल और फाइनल खेल गए। और क्या चाहिए? 15 ओवर हो गए, 82 पे 2। या विन लॉस प्लॉट देख सकते हैं। जिस वक्त ये मुकाबला शुरू हुआ था तो उस वक्त तकरीबन 70% इम्कान था मैच जीतने का सदर्न पंजाब का, लेकिन अब ये 10% से भी कम हो गया। इस बार खूबसूरती से खेला, गेंद गई 1-2 टिपक आती हुई बाउंड्री लाइन के पार। मंगल जई बड़ी तेजी के साथ पेशकदमी कर रहे हैं।
सिर्फ एक स्ट्रोक के फासले पर अपनी निस्फ सेंचुरी से। प्रेशर नहीं है इस वक्त बैट्समैन के ऊपर, और जब आप अपने 50 के करीब हो, आधा स्कोर आपका है टोटल जो चेज करना है उसमें से। इतना तो बनता है एज ए टॉप ऑर्डर बैट्समैन कि आप इस गेम को खत्म करें। अपॉर्चुनिटी आपके पास ये भी है कि आप अपने रन रेट को भी जरा बेहतर कर सकते हैं जब एक छोटा टोटल चेज कर रहे हैं। जहां इस मुकाबले में हम देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तनज़्ज़ुल हुई है, और यहाँ पर मौका है, खुद ही जा रहे हैं हसन खान, बहुत दूर जाकर उन्होंने ये कैच किया। लाजवाब फील्डिंग, बॉलिंग क्रीज से दौड़ते हुए गए तकरीबन मिड विकेट दायरे के इख्तिताम तक, और इससे अच्छी फील्डिंग हो नहीं सकती। इससे पहले जैन ने इनकी बॉलिंग पे कैच छोड़ा था, इस बार जिम्मेदारी खुद ली। बहुत ही शानदार कैच है, कल हसनैन का कैच और आज ये हसन खान का 30 यार्ड सर्कल के मार्कर पे जाके कैच किया है, और इनका जो एक्सप्रेशन है वो अंदाजा ऐसे आप लगा सकते हैं। अमाद बट आउट हुए 3 रन बना के। बलोचिस्तान 87 पे 3। सुहेल नए बैट्समैन, लेकिन स्ट्राइक पर नहीं है अभी। बंगलजई नए ओवर इनफैक्ट अब कंटिन्यू कर रहे हैं हसन। 3 गेंदें बाकी हैं इस ओवर में। जब आपने इतनी अच्छी बॉलिंग की हो एज अ बॉलिंग यूनिट, आपने 100 रन के आसपास आउट कर दिया और टीम को, तो बैटिंग को भी वही कमांड दिखानी चाहिए। आप पूरी अपनी अथॉरिटी स्टैंप करें ऑपोजिशन पे, उसको ज्यादा लंबा ले जाने की इतनी कोई जरूरत नहीं। आज टीम में आए हैं आरिश सोहेल, खासा एक्सपीरियंस है इनके पास, और इनको यहाँ गेम खत्म करना चाहिए बंगलजई के साथ मिलकर। इस विकेट में ऐसी कोई परेशानी है नहीं अभी तक, जितने मैचेस हमने देखे, जो हमने बातचीत की कप्तानों से, अलग अलग स्ट्रैटेजीज के साथ टीमें अप्रोच कर रही हैं जब बैटिंग करने आ रही हैं, और रिजल्ट भी उसी तरह से आ रहे हैं, वेरिड हैं। ये देखिए अगेंस्ट द टर्न खेलने के लिए गए, और ये कैच मुद्दतों याद रखा जाएगा। बहुत अच्छे फील्डर हैं इस वक्त पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में, ये बिलाशुबा बेहतरीन फील्डर्स में से एक हैं हसन। कामयाब ओवर जाता रहा हसन का, 3 विकेट पर 89। And Balochistan need 13 runs of 24 deliveries here. A match that they seem to win quite easily. We've got some spectators here also from outside the stadium. Some are inside the stadium. Ziaul Haq back in the bowling. Haris Sohail back in the team. And this is why Haris Sohail is here. An absolutely stunning catch from Hасан Khan, running backwards. These are not easy.
and then very good landing, soft landing there, and you can see what it means to him. Yeah, that was superb. We have seen some wonderful catches taken, actually. A couple of fine grabs yesterday late in the day. It must be said, there's been a couple of sitters going down as well, but anyway, let's focus on the positives. 3 wickets down at this stage. Just a dozen runs, that's all they need. Coasting. You might have picked up the call on the stump mics. Initial call of 2, safely home. And Bangalzai on 49, he has looked good, and these are very good signs for Balochistan, the youngster who has been given an opportunity to open the innings. He's grabbing the opportunity with both hands. Hey, good on him. Steered it, had an opportunity. When they're chasing a total that's not too pressing, you set your stall out a bit at the top, you can actually just do this, just guide the ship. It's a thick outside edge. It's going to be only the single, but it's going to bring up 50. Nicely played. Important moment for him. It's first 50 in T20. Just 18 years of age. Yeah, this will do him the world of good. And you notch a little milestone like this against top-class opportunity, or opposition, I should say. Some guys have been around for a long time. Guys that have been successful over the years. It really gives you a nice little kickstart to your career, nice little boost. Also like the way they didn't go over the top at all. It was just a little salute to maybe one person in particular. Yep, I think he's pointing out to someone. Just a little bat raise to the dugout. Oh, he's cracked that one. That is a beauty. My goodness. What a wonderful noise off the bat. And you can just see what it meant to him, the 50, because he was making sure he was careful when he was approaching it. And now he has the license because he's almost seen his team home. Excellent shot there. Right from the middle of the bat. The sound of it just showed that where it will go. Outside the boundary. It's a great pity, actually, he's not going to be able to kick on and get himself a real big score here, because he's played nicely. Not many required to win. That's going to lock it away. 11 off the over, 101 for 3. Balochistan are about to pick up 2 points. It's going to get them off the no score zone of the table. And a dot ball. Yeah, I don't think he's going to throw it away now. Now the field is coming up. Nicely worked away on the onside, just waiting for something he can recognise and put away for a single to win the game. There it is. So this is an important victory. The last thing a team wants is to play 3 and to go down 3 times. Unfortunately, it's Southern Punjab who have got that honour. ATF, Southern Punjab. Balochistan will be pleased with the fact that they've won this by 7 wickets, and also pleased that they've got those 2 points.
And ATF Southern Punjab had all their matches in the afternoon. I think the heat definitely got to them. 3 losses in 3 days. And Balochistan have made a very good turnaround. A very good performance, complete performance with the ball and with the bat. Yeah, well played, sir. Nice little knock. Nice to see the players out in the middle congratulating him. I'm sure there's going to be some players just waiting for him as well. As he walks towards his teammates, they'll be really pleased with the work that he has done. Haq leading the teammates out, the rest of his charges. Customary handshake at the end of a game. I suggest that's who maybe the special little finger point was for. And these are the important things that they have. They get this opportunity, these youngsters, to play alongside the senior players, and it does seem that Yasir Shah is still hurt. He's bowled really well, 3 wickets for 4 overs. Better get some more ice on that, a bit more treatment. Make sure that is looked after okay. So that's the story. Balochistan in the end doing it very nicely. The 18-year-old, 58 off 55, 1 6 and 5 4s in that innings, but he paced himself nicely. And Bismillah, 28 off 29 deliveries, 102 for 3 it was in the end, and they did it quite comfortably. These were the partnerships. 17 runs between Imam Haq and Bangal Zai, but the big partnership between Bismillah Khan and Bangal Zai, that was the main factor that they were able to chase this so comfortably. Right, let's have a look at the ATF Southern Punjab's bowlers. Straight away we go to the economy rate. 3 overs, 1 for 10. Naseem Shah has done a really good job so far in the tournament, so he'll be disappointed in the fact that he's on the losing end again today. His economy rate is outstanding, and the rest was controlled, I suppose, because there wasn't a massive total that was being chased down. Look at the match summary. Southern Punjab, 101. That's all they got right at the top, and that's not enough, I'm afraid. 3 wickets to Ahmad Yashir as well, and a couple to Ahmed. And Balochistan, 102 for 3. With Bangal Zai 58 not out of 55, and Bismillah 28 of 29, and Balochistan getting up by 7 wickets. Quick look at the points table. What's that done? It's moved them to number 4 now. So Home City Central Punjab, they're at number 5, and ATF Southern Punjab at number 6. So they're at those spots. No points at all at this stage for the losers in the first game today, but right at the top, Khyber Pakhtunkhwa with 4 points, and GFS Sindh with 4 points, and Northern in the middle as well. Okay, time to take a break. When we come back, we'll have the presentation with Marina.
Righto, just have a look at what happened in the first game today. We've got two, of course, on a Sunday, so it's a nice opportunity to sit back and just watch some cricket. Let's hope there's a bit more action and a bit more higher total, if you like, in the second as well. This was what happened with the chase. Balochistan just getting 100 or getting 58 off 55. 102 for 3 it was in the end, so it was pretty comfortable as it turned out. And if we look at the ATF Southern Punjab's bowling, Naseem Shah, 3 overs 1 for 10 was the pick, and unfortunately they didn't get enough wickets and nothing to bowl at really. That was the problem. When you only post bat first and only post 101, then you're in all sorts of trouble. So disappointing, I'm afraid, for Balochistan. Look at the match summary. Southern Punjab 101, as I mentioned, and Balochistan 102 for 3, and Balochistan 58 not out of 55, and Basmala 28, and Balochistan getting up by some 7 wickets. Okay, time for us to go downstairs for the presentation and join Marina. इनामी तकरीब 7वें मैच के साथ आपको खुशामदीद करते हैं। आज मुकाबला था ATF सदर्न पंजाब का बलूचिस्तान के साथ। बलूचिस्तान ने बासानी ये मैच 7 विकेटों से जीत लिया। सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी होम एज अप्लायंसेस की जानिब से मौजूद हमारे गेस्ट सरफराज अहमद का। अब बारी है होम एज अप्लायंस इलेक्ट्रीफाइंग प्लेयर की, और वो हैं वाहिद बंगलजई, जिन्होंने 58 रन्स बनाए। शानदार इनिंग्स थी और ये कलेक्ट करेंगे कैश अवार्ड 15,000 का। अब बढ़ते हैं टुडेज पेप्सी प्लेयर ऑफ द मैच की जानिब, जो कि नो डाउट हैं अमाद बट। 3 विकेटें हासिल की, 11 रन दिए। अमाद बट प्लीज अपनी ट्रॉफी कलेक्ट करें। उससे पहले बॉल साइन करेंगे ब्राइट ऑफ फैन ऑफ द मैच के लिए। ट्रॉफी के साथ कैश अवार्ड 25,000 का। थोड़ी बात करेंगे। अमाद, पहले आपको मुबारक हो, आपने प्लेयर ऑफ द मैच जीता। उस टाइम पे जब आप बॉलिंग के लिए आए हैं थोड़ा सा प्रेशर था, विकेट में आज उस तरह ग्रिप नज़र नहीं आई। थोड़ा सा आपने अपनी लाइन और पेस एडजस्ट की या अपने प्लान के मुताबिक गए? ऑनेस्टी वाली बात है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑनेस्टी वाली बात है कि जब मैं बॉलिंग के लिए आया, पहला ओवर थोड़ा क्रूशल था, उसके अलावा बिल्कुल नॉर्मल थे। बॉल दिन की वजह से थोड़ा रिवर्स मिल रहा था, तो उसकी वजह से मेरे ख्याल से थोड़ा बैट्समैन को जो है ना मुश्किल हो रही थी। T20 में आसान नहीं होता बॉलिंग करना, स्पेशली अगर आप दूसरी साइड पे देख रहे हो कि हिटर्स भी हैं, विकेट भी जो है वो बैटिंग साइड पे जा रहा है, तो क्या इनिशियल प्लान होता है आपका? बेसिकली बेसिक्स जो है ना वो हम लोग जो है ना, जो मेरा प्लान होता है कि मैं बेसिक्स पे रहूँ, तो उसके साथ थोड़ा बहुत वेरिएट जो है ना वो चीज़ों को करता रहता हूँ। इसके अलावा कुछ स्पेशल नहीं करता। ऑल द बेस्ट आगे के मैचेस के लिए। थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगी ATF सदर्न पंजाब के कैप्टन सुहेब मकसूद को, जिन्हें आज शिकस्त का सामना करना पड़ा। सुहेब, आपने टॉस के टाइम कहा था कि इम्पैक्टफुल इनिंग्स जो है वो मिसिंग है। आज भी उस तरह बीच में रन्स होते रहे, लेकिन पार्टनरशिप नज़र नहीं आई। कहाँ लगता है स्ट्रेटजी में लैग कर रहे हैं या कोई माइंडसेट डिफरेंट है? आई थिंक स्ट्रैटेजी तो बनाई थी बैटिंग में किस तरह खेला, लेकिन अब इम्प्लीमेंटेशन तो बैट्समैनों ने करनी है। आई थिंक बहुत पैथेटिक हम लोगों ने बैटिंग की है। उस पिच के हिसाब से हमने स्पिनर को मुंह उठा के मारते हैं। आई थिंक ऐसी पिचों पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बैट्समैन को लेनी पड़ती है, ताकि आप स्कोर 150 तक किसी तरह ले जाए। और 150 जैसी पिचेज़ हैं, आई थिंक बहुत अच्छा स्कोर होगा, लेकिन बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल बैटिंग की है सारे बैट्समैनों ने। बॉलर्स की तरफ अगर मैं बात करूँ, उस तरह हमें विकेट टेकिंग ऑप्शंस ऐसा नज़र नहीं आई। क्या ऐसा है या आपको लगता है कि पोटेंशियल पे नहीं बॉलिंग हो रही? आई थिंक एक तो स्पिन डिपार्टमेंट हमारा काफ़ी इनएक्सपीरियंस्ड है, अंडर 19 का बच्चा है, और नए बॉल से हमने थ्रू आउट तीनों मैचों में अच्छी बॉलिंग की है। मिडल में हम लोगों के पास थोड़ा पेस बॉलर हम लैग कर रहे थे, इसलिए हम जावलक को आज खिलाया था। लेकिन आई थिंक थोड़ा डिफरेंस वही आ रहा है, हमारे पास मिडल में एक्सपीरियंस्ड स्पिनर्स की थोड़ी कमी फील हो रही है, जो कि बाकी टीमों के पास अवेलेबल है। लेकिन आज का मैच पूरा बैट्समैन जो बैटिंग यूनिट है उसने ही चांस ही नहीं दिया बॉलर्स को। चलें, ऑल द बेस्ट आगे के मैचेस के लिए। थैंक यू। अब मैं दावत दूंगी इमामुल हक को, जिन्होंने आज बलूचिस्तान के लिए पहली विन रजिस्टर की है। इमाम, मुबारक हो आपको, आज मैच जीते हैं। बैटिंग की आप बात कर रहे थे, गेंद वहाँ लैग कर रहे थे, क्या स्ट्रेटजी आज चेंज की आपने?
देखें, बहुत ज़रूरी होता है कि जैसे मैंने पहले भी उसमें बोला है कि ये वो बैटिंग पैराडाइज विकेट्स नहीं, यहाँ पे 150-60 बहुत ही फाइटिंग टोटल है। तो एक बंदे को जो है ऊपर टॉप 3 में खेलना पड़ेगा। जो है आज जो है हमने थोड़ी सी स्ट्रैटेजी की, क्योंकि हमारे पास एक हमारी फॉर्चुनेट थी कि हमने दूसरी टीम को आउट किया जल्दी। तो एक जो भी बैट्समैन थे हमारी यही थी कि अंदर ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें और उसके बाद देखेंगे कि हाउ इट गोज़। तो वही किया, कोशिश किया। मैं अर्ली ऑन फिर आउट हो गया, लेकिन जो बंगल सही और जो है बिस्मिल्लाह थे कोशिश कर रहे थे कि जो है 20 ओवर्स खेलें एंड देन सी हाउ इट गोज़। आज टारगेट कम था, लेकिन आगे लगता है कि आज 3 विकेटें गिरी कम टारगेट पे, तो कंसिस्टेंटली बैटिंग में थोड़ा सा इशू है। देखें, लास्ट 2 ईयर से मेरा परफॉर्म करना बहुत ज़रूरी है मेरी टीम के लिए। लास्ट 2 ईयर से जैसे मैं परफॉर्म दे रहा हूँ वैसे 3 मैचेस में नहीं आ सकी, तो आई गेस मुझे स्टेप अप करना पड़ेगा तो एज अ कैप्टन। तो उसके बाद जब आपका कैप्टन परफॉर्म करता है तो बाकी चीज़ें आसान हो जाती हैं। ऑल द बेस्ट आगे के मैचेस के लिए। थैंक यू। बलूचिस्तान ने आज अपनी पहली विन रजिस्टर की है, 7 विकेटों से ये मैच जीते। इस सेरेमनी से इतना ही। थैंक यू। Marina, thanks very much. Righto, we've got another game that's coming up. This will be a nice little game, this one. What about it? Home City Central Punjab versus Khyber Pakhtunkhwa. Now, this is going to be fascinating. A couple of blokes there, one smiling, one's looking very determined. I think it's going to be a nice little clash, and I don't think whoever bats first is going to get out for just over 100, and also is not going to have about 6 or 7 soft dismissals. So that's not too far away. Make sure you join us for that action, because that is going to be an absolute beauty. We'll see you then. अंपायर ने फौरन ही आउट करा दिया। Outside edge, brilliant catch. Bit of swing, bit of shape. Anderson Hopp is caused dramatically. He's got no pain. बोल्ड कर दिया। तीनों स्टंप्स इन्होंने एक्सपोज की। चांस लिया है और हासिल हो जाएंगे उनको मैक्सिमम यहाँ। Well, he's hit it in the air anyway, and it's gone